welcome to this webinar, respected Madam Professor Kanungo, Dr. Tapas sir, Dr. Sanjay Das. I welcome both the speakers to this webinar, and our co-host and the most important person, Dr. Aditya Mahapatra and Ritanjali Madam. Those who are taking a lot of effort to arrange this meeting. I also congratulate and welcome them, and I welcome all the participants those are joining this meeting across the state. Of course, so we are deferred by 2 Saturdays. That's why the number of participants are less. Today we are having very good speakers with us, and the point of discussions are more also important. जोटा हमर मोस्ट कॉमनली होउछ हम मान पाखरे गोटे रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी हम जानि छे 2.5 किलो कम हेले छुआ प्रीमैच्योर छुआ बेले हम कहूचे से छुआ मान को यदि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट न करिबा केते बेल ऑक्सीजन दबा केते बेल ऑक्सीजन न दबा से पिला मानकर बहुत प्रीमैच्योरिटी होउछ लकीली विथ एलबी प्रसाद हम वर्तमान हमर प्रीमैच्योरिटी स्क्रीनिंग करछु डॉक्टर पाढी के सहित मिसिगिरी at Capital Hospital ebong koruthulu Kotakare. I think for the timing it has been stopped. Then second problem is our postpartum hemorrhage, jota maternity mortality pe major cause of maternal mortality in our state, also in country also. So maternal mortality jo ette hochi tar cause kono particularly ame janiche आमे पेशेंट को जते बेले दउचे एंटीनाटल पीरियड जदि प्रॉपर केयर न नउचे ताले मा माने अकाल रे मृत्युवरण करूछथि डिलीवरी समय बा डिलीवरी पर तापे हम सहित भलो स्पीकर अछंती डॉक्टर संजय दास हु इज एन एक्सपीरियंस पर्सन एंड वर्किंग सिंस ए लॉन्ग इन दिस सिस्टम. I know him personally very much and he is much more involved in Foxy. I think तार एक्सपीरियंस जहा अछि संजय सर गरो that will definitely हमको हेल्प करिवो. I now welcome all the participants once again and hand over the mic to Dr. Aditya Mahapatra. Thank you, sir, for your nice deliberation. मु परिप्रेक्षी रे मैडम श्यामा मैडम को मु रिक्वेस्ट करी मैडम दीपद कहिबे हमर पार्टिसिपेंट मानन को रिगार्डिंग द वर्कशॉप and then we will start the madam. At the outset again, I must congratulate Aditya and Ritanjali, the pediatrician and obstetrician combination. Really, they are doing a marvelous job. And every Saturday we have a very important topic on maternal health as well as perinatal health. And this time we have one of the most important commonest killers, maternal killers, postpartum hemorrhage, and which will be addressed by none other than our senior obstetrician Sanjay Das, who is chairperson, national chairperson in maternal health in Foxy. It's a very important post and he has done quite a lot of interactions during the COVID time on many issues on maternal health, and we are very happy that he is here with us. He's the right person. And again, Tapas, I remember his association with retinopathy when with Queen Elizabeth Silver Jubilee, I think donations. He came to SCB and we had an MOU. And he handed over us to the ROP equipments, which has now been shifted to the SVP PGIP, where you have the bulk of the premature babies and a lot of. Hello, am I audible? Hello. Yes, ma'am. Yes, madam. Yes. Yes, I've brought a better audio set this time. Anyway, so Tapas, again, we are also waiting to. For you to sensitize our healthcare workers, obstetricians, gynecologists, Ayush doctors, nurses, which we really hope they join in large numbers. I don't know why the numbers quite less today, but in any case, all these proceedings are being recorded, and that also I think UNICEF has made provision in YouTube.
And so we can listen to these proceedings even later on by anybody who is interested. We can give the link and they can hear. So now we do, without any further delay, will request Tapas. He might be called to the OT any day. So Tapas, could you share your screen and start straight away with your talk? Okay. Yeah. Unmute yourself. Thank you, madam. Actually, mu Tapas ro introduction टिके दवा चाहूँ participant मानकु. Dr. Tapas Padhi is ophthalmologist. जदियो से pediatrician नुहंती कि gynecologist नुहंती, किंतु यही फोरम रे आमे तांकु डाकिवार कारण होची जे हमर जो असुविधा हुए न्यूबॉर्न मानकर तांको विषय रे से टिके फोकस करिवे हमर जो पार्टिसिपेंट माने अछंती एवं जानिबे पार्टिसिपेंट माने जेतो डिस्चार्ज करूचंती एसएनसीयू रु बा छोट पिलांगु जेतो डिस्चार्ज करूचंती पोस्टनाटल वार्ड रु तांकु फॉलो अप केमती करबा दरकार एवं तांको आई साइट को केमती सेव करबा दरकार एवं तापस रो इंट्रोडक्शन जदी मु देबी ताले ही इज वन ऑफ द डेडिकेटेड ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट इन आवर स्टेट माने प्राइवेट रे काम कले मध्य से गवर्नमेंट सिस्टम प्रति कंप्लीटली डेडिकेटेड एवं तांको जोगु आम माने ओडिसा रे आरओपी स्क्रीनिंग बहुत परिमाण रे आगेची एवं बहुत पिलांकर आखी सेव करा जायची सो पार्टिसिपेंट मानकर निश्चित भाव रे लाभ हबो तांको सुनिबा पई एवं मु रिक्वेस्ट करबी तापस टिके ओडिया रे एवं भलो भाव रे बुझेई करी छोट छोट अळ जिंस हमरो पार्टिसिपेंट मानकु कहबे तापस योर टाइम ओवर टू तापस अनम्यूट करी कि अनम्यूट तापस टिके अनम्यूट हां हैला good afternoon sir, thank you for the invitation and the kind भाबुची आगे सचेतनता हमें निजे हवा दरकार. First it starts with us. निजे सचेतन हेले हमें हम परिवार को सचेतन कर परिया. परिवार सचेतन हेले समाज सचेतन हो, समाज सचेतन हेले विश्व सचेतन हो, तबे जुग सचेतन हो. तेणु जदियो हमर एटी पार्टिसिपेंट्स कम 10 15 बा 15 20 जदि हमें जो एबे जहाँ भी किछि मेसेज म आपन सहित शेयर करिवि जदि ए मेसेज को हमें 10 10 जन पाखरे पहुंचै परिबा आ तांको कहबा आ 10 जन पाख पहुंचैबे ताले मेसेज ता निश्चित भाव रे बहुत लोक पाखरे पहुंच परिबा. आउटसाइड टाइम आगे कहूँ जे आम जस्ट जो कटक रे जस्ट एक्नॉलेज करुच्ची कटक रे जो आम स्टार्ट करथिलु हमर प्रोग्राम से प्रोग्राम एबे जो स्टार्ट करिथिलु एबे भी रन करूची एवं कटक मेडिकल कॉलेज इज वन अमंग द फ्यू वेयर द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से निजे एबे we have built the capacity से screening तो करूचंती तासे तो injection भी दउचंती laser मध्ये करूचंती. The injection, laser, screening all are being done together at SCB medical college and शिशु भवन. तो एटा जोंटा हम स्टार्ट करिथलु एबे भी कंटिन्यू होउची is going on and thank you all and thanks to especially to Professor Kanungo जे कि हमको बहुत से समय बहुत तंकर कोऑपरेशन थिला हम प्रोग्राम टाकू स्टार्ट करिया पई कटक रे कारण शिशु भवन गोटे एमती हब जहां हम देखुची जेते भी हॉट डिस्ट्रिक्ट्स अछि हॉट एनआईसीयूस अछि ता भितरु शिशु भवन इज हॉटेस्ट आ सबटु सिवियर bad types of retinopathy of prematurity cases they come from now at present 2 NICUs. One is Shishu Bhavan, another one is MKCG NICU. मो कहूनी जे इट इज समथिंग टू डू विथ द केयर इठी कारण सेठी सब प्रकार बैड केसेस ही जाउची बहुत छोट छोट पिला बहुत अनस्टेबल पिला सर्वाइव करचंती सेट में एज ए रिजल्ट वी आर सीइंग वेरी सिवियर आरओपी वेरी सिक बेबीज जो माने कि शिफ्ट ही परिबेनी आसी परिबेनी डॉक्टर बाक को चिकित्सा करिया पई मो पिक्चर ता शेयर करि परलिनी एक्चुअली 2 दिन तळे मो पार्लाखमुंड रे गोटे पिला आछि जाको कि प्रीमेच्योरली जन्म होइतला पार्लाखमुंड रे से थिला आउ से पिलाटा 7 मास रे जन्म है कि तार ओजन थिला केजी तो ही दैट बेबी बिकम ब्लाइंड एबे 2 मास पर से आछि जोंटा कि ब्लाइंड ही जेछि आउ गोटे पिलाटे सेम थिंग बरमपुर आछि बिकॉज ऑफ द कोविड इश्यू देयर वाज सम इश्यू इन द स्क्रीनिंग वी मिस्ड
and the baby presented with stage 5 ROP and blindness. तो हमरो ब्लाइंड ए जो आरओपी ता आगुरु कटक भुवनेश्वर रे देखा जाउठला एबे बहुत पेरीफेरी आ हमें समस्ते रोग विषय जानिबा दरकार कारण प्रति डिस्ट्रिक्ट रे ए प्रकार ना एसएनसीयू अछि पिला माने सर्वाइव करूचंती ता छडा नो मोरे डिजीज इन द हॉस्पिटल আজি प्रति हम जेमति भाव प्रीमेच्योरिटी रेट बढ़ी बढ़ी चली प्रति परिवार रे मोर 2 जन पिला मध्य प्रीमेच्योरली बर्न मो निज पुओ झियो 34 वीक एंड 35 वीक तेणु आम ए जो इनफॉरमेशन खाली जे गोटे प्रीमेच्योर गोटे स्पेसिफिक कम्युनिटी जार प्रीमेच्योर बार्थ होची सेमान को दरकार इंपोर्टेंट ता नु हम मान को भीतर समस्त जानिबा दरकार कारण के जानि काली आम निजर प्रीमेच्योर बेबी ही पारे मो आम कलीग कर ही पारे तो हम समस्त जानिबा वेरी इंपोर्टेंट मु कोन करिछि को क्वेश्चन आंसर आकर कर देछि सो एज टू मेक इट interactive and interesting. The first of all, first question is ROP is rare and low on priority. It is satana micha. The answer is the fact is that प्रथमे हम भाबुटले जे एटा गोटे डिजीज बते बहुत रेयर जोटा कि बहुत रेयर एरिया रे देखा जाए रेयर लोक मान को देखा जाए बहुत कम तेनो हम अन्य को डिजीज ऊपर स्ट्रेस करिबा डिजीज टा हम इग्नोर करि परिबा बट एक्चुअली ए प्रकार डिजीज बहुत कॉमन एटा हमें जानी पार नाहंती काहे के ना ए रोगटा को हमें आइदर डायग्नोसिस करि पार नाहंती बा आम पाखु बा कम्युनिटी ले एटा रहि जाउची आम पाखु पहुंचु नाहंती लाइक एन आइसबर्ग डिजीज तो एक्चुअली इंडिया इज इन द थर्ड एपिडेमिक ऑफ रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी आउ जदी एटा तो प्रीमेच्योरिटी स्टैटिस्टिक्स हमें जानछु जे प्रति ईयर ए प्रीमेच्योरिटी रेट बर्थ बढ़ी बढ़ी चलीची आउ जदी हमें जस्ट वी पब्लिश्ड आवर ओडिशा डाटा जेतबेले जोठी भी हमें जाउचंती व्हेन वी अप्रोच गवर्नमेंट आस्क दैट हाउ कॉमन इज दिस आरओपी तो दिस इज आवर डाटा वी हैव पब्लिश्ड दिस दैट प्रति 100 टा बेबी जे 2 केजी रु कम किंबा 34 सप्ताह रु कम समान के भितर 30 रु 35 जन को आरओपी देखा जाउची इन आवर सेटअप इन ओडिशा आ ता भितर 8 रु 10 जन चिकित्सा दरकार करूचंती आ जदी हमें चिकित्सा न करिबा से माने ब्लाइंड ही जी पारंती अर्थात जदी हमें स्टैटिस्टिक्स निया जाय जे रफली गोटे एसएनसीयू रे 15 टा मास को 15 टा पिला 2 केजी रु कम जन्म होचंती तले आपण भाबंतु जे जने किबा 2 जन ब्लाइंड हमें प्रोड्यूस करचंती जदी हमें आरओपी स्क्रीनिंग न करिबा तले जदी 40 एसएनसीयू हे खाली गवर्नमेंट सेटअप ऑन एन एवरेज 40 बेबीज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड who are at risk of blindness every month तार डबल जस्ट इन प्राइवेट सेटअप रे तेणु इट्स वेरी इंपोर्टेंट दीज आर फ्यू स्टैटिस्टिक्स जोटा कि हमें जस्ट फ्यू इयर्स रो आउ इंपोर्टेंस होची जे ए जो रोगटा को संपूर्ण रूप क्योर करी हबो जदी ठीक टाइम आउ ठीक समय रे देखा जाए आउ खोजा जाए ए प्रकार रोग को पूर्ण विथ वेरी हाई सक्सेस रेट रे क्योर करा जाय परिबो तो सेकंड होची आरओपी इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन नो ऑक्सीजन मींस नो आरओपी ट्रू और फॉल्स का काहे कि रेटिनोपैथी प्रीमेच्योरिटी देखा जाउची एक्चुअली आरओपी ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन गोटे इंपोर्टेंट कॉज किंतु इट इज नॉट द ओनली कॉज जो पिलाटा कम दिन कम वजन रे जन्म होची तार देहर अन्यान्य अंग प्रत्यंग भलिया आखिटा मध्य मैच्योर ही न थाए रेटिना इज इमेच्योर तो इमेच्योर इज द प्राइमरी क्राइटेरिया आरओपी डेवलपमेंट पाई जदि गोटे पिला फुल टर्म जन्म होईची 37 सप्ताह परे जन्म होईची ताको जेते दिन ऑक्सीजन भी दिया जाऊ से पिला आरओपी डेवलप करिवनी बा मते जदि ऑक्सीजन गोटे मंथ 2 मंथ्स दिया जाय भी मुहे तो आउ कोन अलगा प्रकार डैमेज डेवलप करिवि बट नॉट आरओपी सो फॉर आरओपी व्हाट इज एसेंशियल इज एन इमेच्योर रेटिना आउ इमेच्योर रेटिना प्रोड्यूस होवा पई हमको आइदर लो बर्थ वेट बा लो जेस्टेशनल एज यूजुअली लेस देन 2 kg किंबा लेस देन 34 वीक एट बर्थ किंतु आरओपी रो सिवियरिटी टा बहुत बढ़ी जाए जदि इफ दे हैव दीस बेबीज हैव कोलेटरल डिजीजेस कोन जदि बहुत सिक अछंती रेस्पिरेशन नहीं पर नांती बहुत दिन पर्यंत ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन दिया जाउची अनमॉनिटर्ड अनब्लेंडेड ऑक्सीजन लॉन्ग ड्यूरेशन तो इट्स लाइक ए फॉरेस्ट फायर आमे जदि केरोसिन टा जोगु निया लागुनी किंतु जदि निया टा लागेला पर आमे जदि केरोसिन के पेट्रोल पकेले तली हु होई की चली उठियो सेमती ई जो आरओपी डेवलप करूची बिकॉज ऑफ द प्रीमेच्योरिटी सेटा बहुत अधिका ही जीवो जदि हमें ऑक्सीजन दिया जाए
तो अन्य फैक्टर्स जो गुड़ाक ए प्रकार आरओपी रो सिवियरिटी को बढ़ाई दी थाए अर्थात सेप्सिस इंट्राक्रैनियल हेमरेज मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन लो वेट गेन आउट इंपोर्टेंट फैक्टर जोटा कि वीकली जति की वेट गेन हवा कथा जदि पिलार सेति की वेट गेन होनी दैट इज आल्सो अनदर रिस्क फैक्टर intracranial hemorrhage multiple blood transfusion anemia thrombocytopenia these are all risk factors phototherapy neonatal jaundice se guda risk factor nuhe severity of ROP develop kariya so this is how pathogenesis of retinopathy of prematurity tene pila jetebale gote choto pilate ma petre ता नॉर्मली मां पेट्रे टिके ऑक्सीजन लेवल तार जो ब्लड सप्लाई ब्लड पिलार फिटल ब्लड रे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम थाए सेही ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ता जो कम थाए हाइपोक्सिया कह जाय सेटा देह रे अंग प्रत्यंग को डेवलप करिवारे सहायता करे ब्लड वेसल ग्रोथ करिवारे हाइपोक्सिया हाइपोक्सिक ड्राइव इज वेरी इंपोर्टेंट जेतोले पिलाटा डिलीवरी हे जाय प्रीमेच्योर पिला सेतोले से ऑल ऑफ ए सडन जो एनवायरनमेंट को एक्सपोज हुए that is relatively hyperoxic माने पिलाटा जो एनवायरनमेंट रे थिला मा पेटरे सेतोले बाहर को आसे बाहर रो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ता मा पेटरे थिबा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन तो अधिक आइ जाय तार ताको अडॉप्ट करिया पई ब्लड वेसल उडा कंस्ट्रिक्ट हे जाय आखिरे रेटिनर ब्लड वेसल जा फल रे कोन हुए ना ब्लड सप्लाई रेटिना को हुएनी आ इमेच्योर रेटिना कोन करे ना गोटे प्रकार ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करे जो ग्रोथ फैक्टर टा बहु परिमाण प्रोड्यूस होवा द्वारा आखिर रक्त नली गुडा ठीक रे न बढ़ी की अंगुर पेंथा भलिया अबनॉर्मल ब्लड वेसल फॉर्मेशन करी की न्यू ब्लड वेसल ब्लीडिंग आउ डिटैचमेंट करी दी ए गुडा आखि भीतर हुए जहा को बाहर को जानिबार कोनोसी लक्षण न थाए तो इनिशियल स्टेज रे जन्म होबार 30 दिन 30 रु 40 दिन भीतर ए प्रकार डैमेज सब हुए जन्म हेला बळे न थाए जन्म हेला बळे पिलार कोनोसी रोग न थाए तो एट बर्थ immature prematurely born baby has a immature retina but no disease किंतु जन्म हवा पर धीरे 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 ए प्रकार डैमेज स्टार्ट हुए जोटा कि आखि भीतर हुए जाको कि हमें जदी आखिटा को जने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट चेक करिवे ताली ही डिटेक्ट कर परिवे बाहर देखि कि हम जानि परिबानी सेति पे रोगटा मिस हे जाय ऑब्वियसली पेरेंट्स माने भाबे जेतु अन्य बहु प्रकार इश्यूज अछि कास कफ झाड़ा आउ सेप्सिस एगुड़ा आई कैचिंग डिजीजेस तेणु लोक मैंने ता द्वारा ताकू प्रायोरिटी दियंती आ आखि भीतर डिजीज जेहेतु बाहर को किसी लक्षण प्रकाश पाइनी बा पिला कहूनी मते देखा जाइनी बोली तो यूजुअली पेरेंट्स माने मिस कर जांती आ डेरी रे तबले 3-4 मास पर पिलाटा फेरी के आसे से तबले कोन भेना आ से प्रकार केस को कोनोसी प्रकार जेते जहा ट्रीटमेंट कले भी आमे ताको फेरी के आनी परंती so this is सबुट इंपोर्टेंट होची जन्म होबार फास्ट जो इनिशियल 1 आवर वेरी इंपोर्टेंट गोटे जिनस यूजुअली हमें देखू जे पिला जन्म हैला परे तार जो ब्लड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन छोट छुआर कम थाए आमे 100 रुहेनी मन जेमती 2 मिनिट्स रे 55 टू 75 3 मिनिट्स रे 65 टू 80% एंड सो ऑन जदी एई समय रे आमे जदी व्यस्त होई कि जदी 100% ऑक्सीजन दबा ताले एटा आरओपी करि परियो बा आरओपी डैमेज करि पारे तो एटा गोटे मेच्योर पिला जन्म हैला परे ता रेटिना एमती देखा जिबा कथा तो टॉप 1 दिस इज द ऑप्टिक डिस्क ब्लड वेसल्स कलर टा एमती रेड देखा जाय जदी अबनॉर्मल जदी जो पिलार आरओपी डेवलप करे हमें देखि परिबा ए जो ब्लड वेसल गुडा को स्ट्रेट नाही टॉर्सुअस ब्लड वेसल्स एंग्री लुकिंग ब्लड वेसल्स मल्टीपल शंट ए आगु को गोटे लेवल आगु को ब्लड वेसल जाइनी एटा होची दिस इज समथिंग कॉल्ड एज एपीआरओपी aggressive posterior retinopathy of prematurity एवडा सब न्यू एनआईसीयू रे जेमती ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड इज नॉट गुड आ बहुत सिक बेबीज थांती ए प्रकार आरोपी देखा जाय जोटा कि बहुत जल्दी ट्रीटमेंट दरकार जदी जल्दी ट्रीटमेंट न करियो ने ब्लाइंड हिजिबे आ अन्य गोटे प्रकार वेराइटी अछि जा पई हम पाखरे किछि टाइम थाए करिया पई आ बिट के टाइम नेले भी चलिबो ताको थ्रेशोल्ड आरोपी जोतरे कि न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन हेछि रीज हेछि जदी एही लेवल ले हमें लेजर करा जाय ए जो पर्यंत ब्लड सप्लाई जाई नांती से जा लेजर कले पिला माने क्योर हेजिबे किन जदी लेट करा जाय माने ब्लाइंड हे जान तनो ऑक्सीजन यूज ऑक्सीजन टा गोटे vital role play करूची in deciding the severity of ROP तेणु ऑक्सीजन हैंडलिंग शुड बी हैंडल लाइक ए ड्रग बहुत कम ऑक्सीजन भी खराब बहुत बेसी ऑक्सीजन भी आम पई खराब सबुट इंपोर्टेंट होची गोटे इंपोर्टेंट जिंस जे हमर प्रतिटी बेबी जहाक भी ऑक्सीजन दिया जाउची देयर शुड बी मॉनिटर किंतु स्कैरसिटी ऑफ इक्विपमेंट बा रिसोर्सेस आमे सब पिला पखरे ये न थाए मॉनिटर जा फल रे कोन बे त आमे जते ऑक्सीजन देई चलसंती हम तो किछि चेक रहिलानी
ता छड़ा ब्लेंडेड अनब्लेंडेड ऑक्सीजन देले दे किछि चेक रहलानी तो एई भलिया जदी 100% ऑक्सीजन गोटे प्रीमेच्योर पिला को दिया जाए 5 घंटा 100% ऑक्सीजन इज एनफ टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ आर गोटे 5 घंटा भी जदी हमें कंटिन्यू कले पिलार डैमेज डेवलप होवार चांस था तापर सेकंड को पिला मानु को नेक्स्ट मिथ इज को पिला मानु को ए पिला ए प्रकार आरओपी डैमेज डेवलप करे तार क्राइटेरिया गुड़ा कष्ट कि बहुत क्राइटेरिया अच्छे इंडियन वेस्टर्न क्राइटेरिया मन रखा बहुत कष्ट तो कौन क्राइटेरिया आम मन रखा तो तेणु जदि आम न जाना ताले क्या स्क्रीनिंग पठेबा कौन पिला को चेकअप करवा तेणु ओडिशा आम गोटे इट इज ऑल्सो फॉर इंडिया तो आम गोटे नेमोनिक बाहर कर 234 234 आम जब 234 मन रखा ताले क्या आरओपी स्क्रीनिंग दरकार और केबे दरकार आम कहीदे पार 234 अर्थात जो पिला 2 kg रु कम किंबा 34 सप्ताह रु कम रे जन्म होचंती तांको 2 रु 3 सप्ताह बा 3 रु 4 सप्ताह 2 to 3 weeks और 3 to 4 weeks भितरे आई चेकअप करवा दरकार आगुरु कहीं कि ना जन्म बेले सैंक्शन डैमेज न थाए कहीं कि आफ्टर 4 सप्ताह पर में ना कारण 4 सप्ताह पर बेलू को आउरी डैमेज अधिका ही जाइथिबो जदि इनिशियल स्क्रीनिंग हेइनी तो निश्चित भाव में एनी टाइम वी शुड गेट दिस बेबीज एग्जामिन बट आइडियली एनी बेबी born less than at 4 week or birth weight less than 2 kg should be screened within 2 to 3 or 3 to 4 weeks of life 2 to 3 किए ना जो मैंने अति sick अति premature babies less than 1 kg आउ gestation age less than 30 weeks समान को even earlier we should screen कहीं कि ना एमान के भीतर severe disease develop करे आउ disease टा early बहुत आगुरु भी develop करी पाए so this is what पिला मानु को less than 2 kg less than 34 week babies should be get screening within 3 to 4 weeks of life तापरे the next question is ROP examination painful is it risky to life difficult to master तो मेनी टाइम्स हमें थोड़ी नुआ स्क्रीनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करती एग्जामिन करियो जाती जे भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से भावती जे तो छोट पिलाटा को केमती आपण एग्जामिन करिवे पिलाटा को कष्ट हबो तार किछि एते सिक पिला को एग्जामिन करिवाटा ठीक की बट एक्चुअली जदि गोटे आरओपी एक्सपर्ट द्वारा आई एग्जामिनेशन करा जे इट्स एब्सोल्युटली सेफ gentle examination and skilled examiner just 30 seconds enough to diagnose ROP 30 सेकंड 1 मिनिट इज एनफ टू डायग्नोस आरओपी छोटो जो माने सिक पिला तांको हमर एम नुहे जे पूरा एग्जैक्ट डिटेल हम एग्जामिन करिवा दरकार जस्ट स्क्रीनिंग रे एम होची जे को माने ट्रीटेबल आरओपी डेवलप करछन्ते ताको जानिबा so it is absolutely safe provided we take adequate care and with topical anesthesia it is painless what are the केमिति हमें पिला मानु को प्रकार पिला को एग्जामिन करू ना these are equipment किछि कॉस्टली इक्विपमेंट में so these are few dilating drops जोटा कि हमें अडल्ट्रेट एट्रोपिन यूज करू एगुडा करे छोट पिला को हमें एट्रोपिन यूज करि परिवानी जस्ट फिनाइलेफ्रिन जो हमें यूज करू अडल्ट्रेट 10% ताको 4 टाइम्स डाइल्यूट करी के टिके डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन रे यूज करा जाय एंड 1% ट्रोपिकामाइड 3 थर आखि ड्रॉप ओके सारी की ए जो आई स्पेकुलम और डिप्रेसर देखा जाउची दिस बेबीज कैन बी examined easily with indirect ophthalmoscope. So any ophthalmologist is versed with indirect ophthalmoscope. आउ छोट पिला को एग्जामिन करिबा आउ टिके एक्स्ट्रा स्किल दरकार जोटा कि 1 month 2 month रे के भी सिखि पारिबे तेनु एनी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट can know how to examine a baby with 1 or 2 months of orientation screening how to examine a baby with indirect ophthalmoscope as we can see here baby is comfortable and well rubbed and with eye speculum in आमे पिला मानु को एग्जामिन करि परिबा करि कि 820 diopter lens रे भितर कोन अछि हम डिटेक्ट करि परिबा it can be done anywhere even for you see this is myself मु निजे मो पिला मो छुआ जे झियो जेतबे जन्म होइतला मु निजे एग्जामिन करूची आ जन ताको धरछत इट इज ऑन माय डाइनिंग टेबल विथ ए पोर्टेबल इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप जदि एटा ही पारुची ताले कोन डिस्ट्रिक्ट रहबा कोन देयर इज दिस इक्विपमेंट्स आर पोर्टेबल हैंडी इक्विपमेंट्स तो जे कोनसी जगह मध्ये टेस्ट ही परिबा कौन कौन ट्रीटमेंट जदि आमे काहाकू डैमेज होउची हमें जानिले आखि भीतर कौन डैमेज होउची जानिले केमिति डैमेज होउची ना ब्लड वेसल्स ठीक भाबरे ग्रोथ न करी के से माने ब्लीडिंग आ डिटैचमेंट करूछन तार ट्रीटमेंट कौन ट्रीटमेंट होउची दी प्रकार लेजर बा इंजेक्शन जो माने लेजर रश्मि द्वारा कौन हुए ना जो एरिया रे ब्लड सप्लाई होउनी ताको हमें लेजर करी के डैमेज करी दउ बा ताको डिस्ट्रॉय करी दउ जा फल रे आभास्कुलर एरिया जोंटे ब्लड सप्लाई होउनी से माने किछि ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करनते बहुत लेजर टा निश्चित भाव स्ट्रेसफुल एंड समटाइम्स रिस्की किंतु
डिजीज मध्य तो रहिबनी इज वेरी प्रोग्रेसिव ताको ठीक समय रे चिकित्सा न करा जाय दिस चिल्ड्रन कैन गो ब्लाइंड नो इट इज लाइक गिविंग बर्थ टू ए चाइल्ड तो इटा तो टोटली तो डिलीवरी जमती पेनलेस नुहे बट गेटिंग ए द हैप्पीनेस ऑफ गेटिंग ए चाइल्ड इज वर्थ टेकिंग दैट लेबर पेन सेमिति जदियो इट इज स्ट्रेसफुल किंतु ताको आमे जदि सक्सेसफुली लेजर को करा जाई परला जो समय रे दरकार करा जाई परला लाइफ लॉन्ग आ किछि ट्रीटमेंट दरकार नै पिला बेबी गेट क्योर तो किंतु यूजुअली लेजर एज इट इज लेजर takes around 1 hour per eye, so 1 to 2 hours the adequate backup रे pediatric pediatrician और nurses जदि तांको backup adequate रहिला हम पिला को monitor कले तो it is safe. If a laser can be done, it is shown here, it can be done in an ophthalmologist clinic or in the NICU itself with sister standing there. Ideal situation, sick babies, it is best to do these lasers in the NICU setup. As you can see here, I mean, this is an AMRI setup at the AMRI with sister there, monitor there, ventilator. Jadi kon kichi asubidha hela, taku the baby can be taken over, ba taku ye kari haba stabilize kari haba. एटा हम निज ओपीडी जो थरे हम निजे एग्जामिन करूची तापरे लेजर करूची इन आवर वर्क तो इट कैन बी डन एट एनी प्लेस दिस इज हाउ द लेजर मशीन लुक्स लाइक आउ लेजर सेटअप आउ लेजर हेला परे इभले ही आखि देखा जाय एटा होची रेटिना एई जगह रे याठो आगु को ब्लड सप्लाई हो नठला हम लेजर कला परे वी कैन सी दैट द ब्लड ऑल द ब्लड हैज गॉन एंड रेटिना इज अटैच्ड आउ ई प्रकार रेटिना रे विजुअल एकुटी जमती गोटे नॉर्मल लोकर विजुअल एकुटी 6/6 they can have the 6/6 also and they can lead a normal life, healthy life. Now second question is ROP screening and treatment can be delayed till the baby recovers completely. It is a very common question. Many times people say that baby is so sick, why don't you delay your treatment? Now it is like very severe. The sicker the baby, the higher is the chance for ROP. जो baby टा जिते दुर्बल से आउ जिते unstable से सेते हायर सिवियरिटी रे आरओपी डेवलप करिवार चांस अछि से सेते आगुरु डैमेज डेवलप करिवार चांस अछि तेनु हमको दीटा को देखियो पड़ियो पिला को स्टेबल भी करियो पड़ियो बा ताको एडिक्वेट मॉनिटरिंग रे एग्जामिन करियो पड़ियो एग्जामिनेशन पे अलाउ भी करियो पड़ियो जति वेरी सिक टू सिक टू टच ताले दिने 2 दिन 3 दिन हमें ये कर परिबा देरी कर परिबा किंतु इट कांट बी डिलेड जस्ट फॉर द सेक दैट बेबी इज वेरी सिक और एग्जामिनेशन एते जेंटली करियो जे विदाउट इवन विदिन द इनक्यूबेटर वाल भितरे मध्य पिला मानन को इनडायरेक्ट ऑप्थाल्मोस्कोप रे इजीली देखि दी हो. So this is how it is. जदि हमें देखियो एटा गोटे पिलार आखि थिला these are all blood vessels जोटा कि हमें जे देखिबा स्ट्रेट न जाई कि टिके कर्व देखा जाउची ताको ट्रीटमेंट पई कोहा गला किंतु से माने बुझी पारलेनी जते काउंसलिंग करा गला मुझे बुझी पारलेनी देन द बेबी से कहले जे पिलाटा बडो ही जाउ ता पर हमें ट्रीटमेंट करबा मासे पर आसला पर वी कैन सी दैट देयर इज नो रेटिना नाउ इट्स जस्ट टोटली डिटैच्ड एंड रिप्लेस्ड विथ फाइब्रस टिश्यू एते बळकु तंग जणा पडला बाहर को से माने पेरेंट्स माने जानि पारले पिलाटा देखि पारलानी आउ किंतु एई समय रे आ जहा कले जोंठी भी गले जिते पैसा खर्च कले मध्ये किछि करि होनी. सो टाइम मींस विजन 20 to 30 डेज स्ट्रेटजी जे हम फॉलो करिवा पिला मन को हमें ट्रीटमेंट कर परिवा समय समय रे कोन हुए ना ता छडा पिला तो ब्लाइंड ही जांती किछि किछि केस रे जदि हम बहुत डिले करिवा फॉर एग्जांपल ए बेबी केते सिक बेबी ताकू देखिबार थिला 4 सप्ताह परे किंतु समवन सेड दैट नो बेबी सिक यू डोंट एग्जामिन तो मासे डिले ही गला तो मासे डिले हला पर ये कोन हला ना डिटैचमेंट स्टेज को पळेला करी कि पार्शियल ब्लाइंड कर देला तापर हमें बहुत कलुस इंजेक्शन सर्जरी एवरीथिंग वाज रिक्वायर्ड बहुत किछि करी कि मध्य विजन 1 मीटर 2 मीटर रो अधिक आनी हलानी से जो गोटिए मास डिफरेंस जो 3 सप्ताह डिफरेंस ता ओटे जीवन जाक पई पिलाटा को सिवियरली विजुअली इंपैक्ट कर देला जदि हम ठीक से मास रे डिटेक्ट करी के पिला ऐसा कराई तांता ए बलिया पूरा क्योर ही तांता फॉर एग्जांपल दिस बेबी फ्रॉम राउरकेला दिस इज द टाइम इफ यू डू लेजर तळ ऊपर फोटा दीटा ए डिजीज एटा ब्लड वेसल जाउची रक्त नळी अछि अबनॉर्मल ब्लड वेसल्स टी ग्रो करूची ता आगु को ए जगह रे ब्लड सप्लाई हेनी ताको जदि लेजर कला पर एडा सब मेल्ट डाउन करूची एवं दे कैन हैव वेरी गुड आउटकम एक्सीलेंट आउटकम. अगेन अनदर फोटो लेजर करा हिची हम देखि परिबा जे इट ऑप्टिक डिस्क आ गुड लेजर द्वारा इट कैन एंड एट 7 ईयर एज रे पिला जी पिलार विजुअल एकुटी 6/6.
सो जदि बेले बेले कौन हुए ना मन कर जो इनिशियल स्क्रीनिंग मिस हो जाइए पिला आसी तथापि डिड वी लूज ऑल द अपॉर्चुनिटीज समटाइम्स डिजीज कैन गो ए स्लोअर कोर्स आल्सो तेणु जदि भी बाय चांस आम पिला को कौन पारे स्क्रीनिंग कर पार ना बिकज ऑफ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी बा आउ किछि असुविधा हला एटलिस्ट डिस्चार्ज आल्सो पिला को जदि हम कहिबा 2 मास खंडे बेले 2 मास बेले पिला आसिले मध्य दे वी आर स्टिल वी कैन हैव सम होप एंड आम पिलाटा को ये कर परिया फॉर एग्जांपल दिस बेबी रिफर्ड फ्रॉम भाईजाग रु आस्तिला तो बहुत लेट रे आछि इनिशियल स्टेज रे ट्रीटमेंट हेलानी 2 months बार्थ पर आस्तिला देन रिक्वायर्ड सर्जरी इंजेक्शन बहुत चीज कला पर देन स्टिल वी कुड रिस्टोर द विजन वी कैन सी तळ दीटा फोटो होची पोस्ट इंजेक्शन लेजर और सर्जरी तो 4 years रे अगेन 2030 जब 6-9 विजन को आ जाए तेणु इवन इफ वी लूज इनिशियल स्क्रीनिंग तो मिस करवा कथा नुहे बाय चांस जदि आम मिस भी कले till we have opportunity for another 2 to 2.5 months still these babies should reach a ROP trained specialist सब ophthalmologist ROP trained में बा सब pediatric ophthalmologist ROP trained में even a general ophthalmologist also might be ROP trained जे कि निजको जदि स्किल करिथिबे जे ए छोट पिला मन को केमिति एग्जामिन करबा दरकार ता भीतर रेटिना को केमिति हम डिटेक्ट करि परिबा डिजीज को एतिबो तो एनी ophthalmologist with ROP training should be referred for this examination. तो दिस इज ऑल अबाउट लेजर किंतु बेले बेले कौन हुए ना जो पिला माने अति सिक दोज बेबीज हु आर वेरी सिक जाको टच भी करि हबनी तो तांको जदि लेजर करा न जाई पारे एबे वी हैव न्यूअर ट्रीटमेंट मोडालिटीज लाइक इंट्राविट्रियल एंटीवेजेफ जो इंजेक्शन की पिला माने आखि भीतर इंजेक्शन दिया जाई पारे ए प्राय मासे 2 मास पर्यंत डिजीज टाको कंट्रोल स्टेज रे रखि दबो देन टिल द बेबी ग्रोज अप तेणु मासे 2 मास टाइम आम इंजेक्शन द्वारा किनी दे पारिबा जहाँ फल पिला मासे 2 मास स्टेबल है दिस बेबीज कैन बी लेजर जदिओ देयर आर मेनी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इंट्राविट्रल एंटीवेजेफ्स लाइक आम तो आखि भितर दउचंती रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिस्क ऑफ डिटैचमेंट ब्लीडिंग एंडोप्थाल्माइटिस कैटरेक्ट ये सब तो अच्छी तेणु किंतु तथापि जेतबेले बहुत सिक बेबीज जहाँ को किछि करि हबनी दिस ड्रग्स वर्क वंडरफुली टू कंट्रोल द डिजीज आउ ता परे परवर्ती स्टेज रे आमे ताकू लेजर कर दे पारिबा बट देयर आर दिस अलार्म्स तो फाइनली आमे देखिले जे इंजेक्शन आउ लेजर आउ जो पिला माने ताठो आहुरी अधिका स्टेज को जानती ताको सर्जरी दरकार पड़े स्टिल 2 ରୁ 3 मास भीतर आसले सर्जरी करी मध्य किछि विजन को बंचा जाई पारे किंतु ताठो अधिका लेट स्टेज रे जे आसंती ताको किछि ट्रीटमेंट करा जाई पारे तापर से ए पिला माने किछि पिला पार्शियली ब्लाइंड हे कि स्क्विंट कैटरेक्ट ग्लूकोमा ए सब मध्य डेवलप करि पारंती इवन आफ्टर ट्रीटमेंट समटाइम्स लेट स्टेज रे जे पहुंचले जहाँ को ट्रीटमेंट करा जाए तांको मध्य बेले बेले से डिजीज डेवलप करि पारंती आ से प्रकार पिला मानकु हमकु फॉलो अप करबा दरकार ए सब जिंस रूल आउट करिया पे स्क्विंट कैटरेक्ट ग्लूकोमा तो तेणु ट्रीटमेंट परे तांको फॉलो अप आल्सो इज इंपोर्टेंट टू रूल आउट दिस सो दिस एन एग्जांपल पैरेंट फ्रॉम द पुरी हमें जो देखि परिबा पिलाटा से 7 months रे the baby came and both the eyes have corneal opacity so diagnosed as corneal opacity actually এটা corneal opacity नुहे तब जदि if we take the history ए पिलाटा 7 मास रे जन्म हितिला आ ओजन थिला 1300 ग्राम आ गोटे मास पूरी एनआईसीयू रे रहिला ते किंतु somehow they missed the pediatricians advice that babies should be screened within 1 month 7 months पर आसिला पर actually कोन हिछि ना पछपट परदाटा डिटैचमेंट हे कि लेंस रे लागि कि लेंस आसी कॉर्निया रे लागि जाइछि कॉर्निया लागबा द्वारा बोथ द आईज हैव ना कॉर्नियल ओपेसिटी एट प्रेजेंट तो ए बलिया स्टेज रे किछि करि हबो तो दैट इज व्हाई जदि आमी स्क्रीन करबा पिला मानको ठीक टाइम रे ताले मानको सब मोर देन लाइफ लॉन्ग पई विजन दिया जाई पारे आउ ता छड़ा आरओपी खाली तो आरओपी इज अ सिस्टेमिक मैनिफेस्ट इज अ ऑक्युलर मैनिफेस्टेशन ऑफ अ सिस्टेमिक डिजीज वेयर नर्सेस प्ले एन इंपोर्टेंट रोल खाली एटा जे ऑक्सीजन प्रीमेच्योरिटी जो होचे तानवे ठीक उपाय जदि ऑक्सीजन न दिया गला एक्सेसिव ऑक्सीजन दिया गला सेप्सिस ठीक वेट गेन न होला ठीक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बा इन्फेक्शन ठीक केयर न निया गला डिजीज बहुत अधिका मध्य हबो जदि जोटे गुड एनआईसीयू विथ गुड कोलेटरल केयर गुड ऑक्सीजन केयर डिलीवरी प्रैक्टिस एथरे हम देखु जे सेमानकर द रेट एंड इंसिडेंस एंड सिवियरिटी ऑफ आरओपी इज वेरी लेस
तेणु खाली जे ट्रीटमेंट करदेले हबनी जमती आमे फॉर एग्जांपल पोलियो को जदी इराडिकेट करियो को चाहिबा आमे ऑर्थोपेडिशियन पाकु जाउ नांती जमती पोलियो ता हेला परे लिम्ब डिफॉर्मिटी क्योर करिया पय आमे जदी ऑर्थोपेडिशियन को जिबा आमे पोलियो क्वीन करि परिबानी तेणु जदी मूल कॉज जोंति पय होउची ताकु जदी आमे मूलरो प्राइमरीली जदी आमे ताकु टार्गेट करिबा जदी इश्यू करि परिबा रोग को ये करा जाई परिबो आ सेटा कोठी स्टार्ट होउची स्टार्ट्स विथ पेडियाट्रिशियन नर्सेस केतबेले ना टाइमिंग ऑफ स्क्रीनिंग कहा को स्क्रीन करिबा लेस देन 2 kg लेस देन 34 वीक केबे स्क्रीन करिबा 2 to 3 weeks 3 to 4 weeks किए स्क्रीन करिवे ना आरओपी ट्रेंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आरओपी ट्रेंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट देयर आर मेनी स्लोली पीपल आर बीइंग ट्रेन्ड इन आरओपी इवन एज आई सेड I mean once we started program in Cuttack now is independent in doing screening laser and injection semti MKCG medical college re madhya ophthalmologists they are well capable of screening and injection sepate Baleshwar and Anugul different places now ophthalmologists are trained tenu ame at least whenever we come across these babies they should be referred to an ROP trained ophthalmologist for screening. That's all I stay here. So mu jodi kichi questions ba doubt achi I can take up these questions. Thank you Dr. Tapas. Actually mu eti kichi jinsa kahiba pai chahuchi for the participants. तापस वर्तमान आमर आरोपी जदि आम ओडिशा रे किछि प्रोग्रेस करथिबा सेथरे तापसंगर बहुत रोल अछि एवं से हमकु मोटिवेट करले बा हमकु सेंसिटाइज करले व्हाट इज आरोपी एवं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन प्रीमैच्योर बेबीज बोली हमें जानिलु तापर हमें ई प्रोग्राम को ई डायमंड जुबली ट्रस्ट एलबी प्रसाद एवं समस्त मिसिकरी हमर गवर्नमेंट मिसिकरी ओडिशा रे बोधे बहुत परिमाण रे आमे स्क्रीनिंग करि पारिछु खाली कटक भुवनेश्वर नुहे ए स्क्रीनिंग प्रोग्राम विथ हेल्प ऑफ एलबी प्रसाद आमे बालेश्वर करि पारुछु देन मयूरभंज रे करि पारुछु VSS मेडिकल कॉलेज रे वर्तमान स्टार्ट हेछि तापरे एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज रे आरंभ हेछि मु किछि दिन कोरापुट रे मध्य करथिली आमे एलबी प्रसाद रो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नेकरी वर्तमान रायगढ़ रे कंटीन्यूअसली चलिछि बिकॉज़ एलबी प्रसाद ब्रांच इज देयर एवं आमे चेष्टा करछु बलांगीर देवा पई एवं हेल्थ डिपार्टमेंट तरफ रु मध्य बहुत स्टेप्स नेया जाय जे थिरे कहिना ओडिसा रे आमे रेड कैम देन आउ अलगा कैमरा जहा कि फाइबर ऑप्टिक कैमरा जहा कि तांको दरकार आरओपी स्क्रीनिंग पई आमे प्रोवाइड करि परछु पाखा पाखी 12 टी जिल्ला रे एवं मेडिकल कॉलेज रे कैमरा अवेलेबल अछि ट्रेनिंग मध्य अनेक डाक्टर मानकर माने जो माने हमर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अछंती डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रे एलबी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर द्वारा तांको ट्रेनिंग दिया जाउची एवं एई ट्रेनिंग माध्यम रे से माने एई स्क्रीनिंग करि परचंती तेनु मोर रिक्वेस्ट रहइबो सब पार्टिसिपेंट्स माननकु जेमिति तापस कहिले जे 35 सप्ताह रु कम हेतिबा पिला एवं 2000 रु कम हेतिबा पिला 2000 ग्राम रु कम बार्थ वेट थिबा पिला समस्त को आमे स्क्रीनिंग करबा दरकार एवं दिस इज ए मेडिको लीगल कॉम्प्लिकेशंस आल्सो काहेना जदी आपण माने डिस्चार्ज करूचंती एवं तांको डिस्चार्ज टिकेट रे तांको एडवाइस दउ नांती जे आपण पिला मान को स्क्रीनिंग करबा पई ताहाले यू विल लैंड इन प्रॉब्लम एवं सेही प्रॉब्लम बहुत समय रे आमे प्राइवेट हॉस्पिटल मानकर देखिचे मेडिको लीगली दे आर लायबल आल्सो सो ऑन दिस ओकेजन मु तापस को रिक्वेस्ट करबी तांकर ए उद्यम जारी रखिबे एवं आमे मध्य आज ए सर्विस प्रोवाइडर आमे बहुत प्रीटर्म मानन को सेव करूचे आपण देखिबे मु गत काली गोटे डाटा भी दउतली 65,000 बेबीज एसएनसी रे काम करूचन माने एडमिशन होचंती एवं तादरु 2% होचंती लेस देन 1000 ग्राम सो लेस देन 1000 ग्राम जदि सर्वाइव कले एवं तांकर जदि आखि ड्यूटी आमे परीक्षा न करले टाइम टू टाइम बा विदिन 4 वीक्स ताले से ब्लाइंड हेजबार संभावना बेसी एवं आउरी गोटे सबुटु बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा कहले ब्लाइंडनेस बा आरओपी आमे प्रिवेंट भी करि परिबा खाली जे सब पिला आरओपी ऑक्सीजन पाइला माने आरओपी हेजि बोली माने नाही आमे जुडिशियस यूज ऑफ ऑक्सीजन करिबा इन्फेक्शन को केमिति प्रिवेंट करिबा ऑल एसेप्टिक मेजर्स केमिति नबा सब बेबी को केमिति मदर्स मिल्क प्रोवाइड करिबा मदर्स मिल्क प्रोवाइड करिबा द्वारा मध्य अनेक समय आरओपी रो रक्षा मिलता है एवं एई सब जिंस जदि आमे करिबा ता एवं प्रॉपर केयर इन द एसेंस नबा ताले निश्चित आरओपी मध्य कमी जिवे सो थैंक यू तापस एवं तुमरो बिजी शेड्यूल भितरे हमको
समय देथिबारु बिफोर गोइंग टू गायनिक टॉपिक इंपोर्टेंट पीपीएच टॉपिक आदित्य यस सर सर आपन कहूची सो हमर प्रेसिडेंट आईएपी डॉक्टर प्रसन्न कुमार साहू जॉइन करचंती सर जदी किछि कहया पई चाहउचंती सर टिके कोहंदु आपनकर वैल्यूएबल एडवाइस अरे मु आज बहुत खुशी जे आपण आज एते बढ़िया टॉपिक टा आज सिलेक्ट करचंती किंतु बड़ दुख लागुची सबु थर Not कामर audible. 200 रु बेसी पिला हुंती Hello. हां हेलो नॉट ऑडिबल क्षमा ନାଇଁ ଶୁଭୁନି ଏବେ ଶୁଭିଲା ହଁ सुबिला ହଁ हां सुबुची सर कोहंदु हाँ माने खुशी लगुची जे आपण माने ये टॉपिक टा आज इनक्लूड करचंती एथरे किंतु गोटा बड़ दुख लगुची हमर सबु थरक 200 रु बेसी व्यूअर्स होंती आज जमा पार्टिसिपेंट रे 52 देखउची कोन हेची मु जानि पारुनी नहीं सर हमर गोटे ईस्ट जोन नियोकन चलची हां ईस्ट सेटा तो जोन चलती है नियोकन रे एसएनसी रो स्टाफ नर्स माने जॉइन कर जाइचंती जा फल की पार्टिसिपेंट कम जाइचंती गला तणो मोर प्रैक्टिकल ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ एक्सपीरियंस ଇଏ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ପଛରେ ରଖିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା हां ठीक अछि मैडम किछि असुविधा नहीं दिस विल बी रिकॉर्डेड YouTube रे एंड यस यस YouTube ରେ ଅଛି ଏଇଟା ପ୍ରସନ୍ନ ସାର୍ हां ଏଇଟା ଆମେ को YouTube ରେ UNICEF record କରୁଛି so it should be available to anybody who can listen later on and it's a very important topic there are some questions Tapas are you there टिके सेमा टिके रुह हाँ माने माने एइटा मोर जा मने पडुची 3 वर्ष तळे एलवी प्रसाद प्रथमे हम आईएपी रे एटा को इनिशिएट करथिले हमरोटा एक्सक्लूसिवली आरओपी रो लेक्चर हेइथिला तापरे हमर पेडियाट्रिशियन माने बहुत सिंसियर होइचंती एवं रेफर करचंती केस मो केस रे मु कहूची जाजपुर रोड रे हमर एंती सुविधा नाही किंतु गोला वर्ष आई हैव रिकॉर्डेड 11 केसेस होम डिलीवरी एंड हॉस्पिटल डिलीवरी ऑफ प्रीमैच्योरिटी मु समानकु एससीबी आ एलवी प्रसाद को पठेइथिली माने 11 रु 11 जन जाक समस्त बढ़िया अछंती समस्तकर आई साइट इज ओके तो मोर गोटिया कथा होची जोठी भी हॉस्पिटल रे डिलीवरी होची जनरल हॉस्पिटल हो सब सेंटर हो से माने पठांतु एससीबी की पठांतु कि एलवी प्रसाद को पठांतु जो द्वारा कि हमें हमरे ब्लाइंडनेस टा को ट्रीटेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस टा को हमें प्रिवेंट करि परिया मु बहुत कैपिटल धन्यवाद हॉस्पिटल तो पठे परिबे हां बहुत धन्यवाद नहीं हमें एससीबी हमको पाखो एससीबी सर मैडम मु आ गोटे आपन इन्फॉर्मेशन दबा को चाहू जे ई मौका रे आपण माने ब्लॉक को पठे परिबे आपण ब्लॉक रे मोबाइल हेल्थ टीम आरबीएस के अवेलेबल अच्छा हां it is their work, it is their duty to register them, to carry them free of cost. अच्छा so जे माने नै कि पहुंचेबे एलबी प्रसाद रे स्क्रीनिंग करेबे एवं पुणी नै कि आसीबे एवं जदी काहार लेजर थेरापी दरकार 10,000 रुपीस पर आई हमर एनएचएम तरफ रु प्रोविजन हेची एवं समस्ते ताकू पाई परिबे सो दिस इज अनदर इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स सर वेरी थैंक यू सर बढ़िया एटा हमको एटा मोते जणा नथला अंतत म यानी कि हमें तांको एथर मोबिलाइज करू एई प्रकार यस सर आ मु जो 11 जण पठेइतिली 11 जण रु 11 जण जाक समस्त आई साइट इंटैक्ट होची समस्त भलो अछन तेणु मु डॉक्टर तापस को धन्यवाद देबी जे एलवी प्रसाद को धन्यवाद देबी काना हमें आगुरु कोन जानि नथुलो आरोपी कोन 4 वर्ष तळे समान जो हम आईएपी रे इनिशिएट कले तापर हमें माने पढिलु तार जानिलु रेफर कलु केस तापर हमें माने वर्तमान टिके ये हला माने ए क्राइटेरिया को समान फुलफिल करथला हमें संगे संगे पठेइ दउछु अंतत मो पक्षरे आ मु आईएपी मार्वेलस अचीवमेंट आ स्टेट आईएपी एज द प्रेसिडेंट मु श्यामा को धन्यवाद दउछि आदित्य तो आम पिला आदित्य को धन्यवाद दउछि एवं एलवी प्रसाद र तापस एवं आउ से डॉक्टर पाढ़ी ना कोन अछंती मोर ना तो मन पडुनी किंतु डॉक्टर तापस को आई नो हिम आउ समान को अंतत बहुत धन्यवाद दउछि समान जो प्रकार नैचंती मूवमेंट करिसंती ओडिसा रे माने दैट विल गो ए लॉन्ग वे इन प्रिवेंटिंग ब्लाइंडनेस इन ओडिसा थैंक यू सर थैंक यू तो फेलिसिटेट करिया दरकार पीडियाट्रिक एसोसिएशन तरफ रु तापस शुड बी फेलिसिटेटेड okay and also he should get his Padma Vibhushan no madam really he has saved so many children's eyesight and it is marvelous let us go to the topic madam yes okay now some questions if Tapas is there yes sir at what age after laser surgery anti-vague can we finally come to conclude that the procedure is successful and outcome is favorable
This is a question from M. Suman Kumar. Tapas, please answer this question. Yes, sir. Should I answer in Odia or English? Suman Kumar. You can answer in English. Okay. So usually, why we are worried so much for ROP? Because if we catch the disease and do laser in time, the success rate is very high, and the outcome comes within a month. So if you have done a good laser, so within 2 to 4 weeks, the baby gets cured, and it is a cure for the lifelong. It's not like diabetes, hypertension, tumor. You keep on following these babies for lifelong and treat them multiple times. But if you do good laser, this good laser, adequate laser, the baby gets cured in 1 month. That's all. But sometimes, if laser can't be done, then we give injection. Anti-VEGF injection. So these injections are usually given as a replacement for laser. Very rarely we give injection after laser, because the laser usually responds very well. But very rarely, suppose despite laser the disease is not regressing, we give injection. But majority of time we give injection in place of laser, because for few reasons. Baby is so small that we can't do laser. Second, for doing laser, the pupil need to be dilated. So this is in the eye, there is a small opening. The pupil should be big enough. But when the disease is very severe, this opening becomes very small. So one can't see unless you see where you will do laser. So in those cases, we give injection. And after giving injection, the disease does not regress like laser within 1 month or something. So the injection, what it does, it keeps the disease under control, then followed by laser. So only injection, the disease usually doesn't regress completely. In majority of cases, in 10-20% cases, it can regress completely, but it takes around 1 to 2 years. So that is why till now our gold standard of treatment is laser. If we do timely laser, baby get cured within a month. If we give injection, then cure doesn't come immediately. It should be followed by laser in another 1 or 2 months. If only injection, we have not done laser and disease is regressing, it takes around 2 years for it to completely regress. Okay, another question is there. Sir, can HIE2, that is birth asphyxia, moderate birth asphyxia baby need ROP screening? If the baby is mature, full term, that is more than 37 weeks gestational age, and birth weight is more than 2.5 kg, so these babies, even if they have birth asphyxia, they don't develop ROP. So birth asphyxia in a term baby or without risk factor for ROP doesn't cause ROP, but it can cause some other problem. Like if there is birth asphyxia, it can cause hypoxic and ischemic encephalopathy, and that case compromise the vision. So they should be screened not for ROP, but for other visual behavior. After 3 to 4 months, when you can objectively assess the vision. But if you have prematurity risk factor along with birth asphyxia, then these babies are at a higher risk of developing ROP compared to only prematurity in low birth weight. So birth asphyxia with prematurity should be screened for ROP. Birth asphyxia but no prematurity history, no low birth weight shouldn't be screened for ROP. They can be screened for vision assessment at 3 to 4 months of life. Exactly. Very good. Thank you. Actually, एटी मु इन्फॉर्मेशन दवा पई चाहूची समस्तंकु हमर birth asphyxia बेबी बा sepsis बेबी बा premature बेबी जदि हमें डिस्चार्ज करूचे बिफोर दैट हमें समस्तंकु DIC देखे दबा दरकार बा DIC को रेफर करबा दरकार. DIC is called District Early Intervention Center. आमे वर्तमान 30 टा जिल्ला रे एटा काम माने फंक्शनल अछि RBS के तरफरु. एटी birth asphyxia रे जो स्क्रीनिंग करा जिबा कथा जेमदी डॉक्टर तापस पाडी कहिले जे खाली ROP नहीं अदर डिफरेंट विजुअल प्रॉब्लम्स जदी थिबो ताले सेटा मध्ये आइडेंटिफाई हे परिबो एवं ताकू से अनुसार मैनेज करा जाय परिबो. So screening of hearing screening, ROP screening, then vision screening, आउ फिजियोथेरापी जे दरकार ये सब जिंस हमें करे परिबा थ्रू DIC. तेनु मोर समस्त रिक्वेस्ट एसेंशियल डिस्चार्ज करबा परे DIC देगिरी पिलांकु छाडंतु. Thank you Dr. Tapas. There is no more question, so I am very much thankful to you. आपण निजर एतिकी समय स्पेंड कले एवं हमकु
valuable time ru dele amar participant mananku वर्तमान 53 participant हेई गलेनी धीरे धीरे बढ़ुचंती so now बहुत धन्यवाद तुमको एवं मु जते बेले भी हमकु दरकार हबो आपण मानकर सहाय्य माने अथल स्पेसिफिकली एलवी प्रसाद एवं तापस रो सहाय्य रे हमें ए आरओपी स्क्रीनिंग को आगु को नबा एवं 30 डिस्ट्रिक्ट रे केमति आरओपी स्क्रीनिंग हे परबो तार व्यवस्था करिया पई चेष्टा करिवा थैंक यू वेरी मच Thank you, sir. Just last word, I would say, so RBSK is doing a very good job here in Odisha. So we have many difficulties as well as plus points in Odisha. So Odisha, the plus point is that our ROP screening rate is very high. Slowly we are picking up. RBSK support is much more than in any other districts. So RBSK network je kemti kamo karuchi na, for example, last 2 months tale Sundargarh baby, very sick babies gote Bisra area ru astila premature pilate kintu taku semane taku identify kariki सेठी जने गले जाई के स्क्रीन करी के 50 जन भितर जने पिला जो 4 जन पिला को ट्रीटमेंट दरकार है शिफ्टेड इन ए व्हीकल they got very sick, I could not treat them in our hospital. I admitted them in the capital hospital. Again, capital hospital RBSK team helped tremendously. City admitted, we treated them free of cost. Babies again went back to their place. So this system is working. Same thing happens. Babies from Burla, they get admitted in Sishu Bhavan, they Katak, the babies get treated there, then they go back safely. So this good networking is happening in Odisha. Avita jodi hobo आमे निश्चित भावरे आरोपी टाको पूरा इराडिकेट करि परिबा आरोपी ब्लाइंडनेस टाको इराडिकेट कर परिबा लाइक स्मॉल पॉक्स इराडिकेटेड प्रीमेच्योरिटी को हम इराडिकेट कर परिबानी किंतु ब्लाइंडनेस टाको इराडिकेट करि होबो एंटायर ओडिसा तो इट इज ए टीम एफर्ट एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल remember that criteria 2 3 4 and be a part of this mission. Thank you very much. Thank you very much Tapas. It was a very illuminating talk and inspiring, and we'll take it forward. And really Odisha is doing marvelously as regards policy implementation is concerned, in particularly in area of health. And Dinabandhu as our team leader, I'm sure he must be very happy. I request Dinabandhu for his comments. Dinabandhu sir, your comments please. Thank you madam, thank you Dr. Pahari for your marvelous talk. You are always with us and we are always with us. आपन को सहयोग जोगु हम स्टेट आज बहुत किछि करि पारि जोडा डॉक्टर महापात्र कहिसंती. I once again thanks and wish same type of support from you so that our state people can get better achievement and better help. Thank you once again. Madam, now over to you to introduce. Shall we go to Sanjay Yes. Das? Yes. Prasanna, please remain with us. I hope you are free. Thank you so much for joining. मैं जो एते गुडा सब वेबिनार चलची एट अ टाइम जे हमर पार्टिसिपेंट कम ही गेले. एनीवे मु बर्तन संजय दास को कहूची से not only is a very good obstetrician, very efficient obstetrician, he has achieved wonders in IUCDs, PPIUCD awards he has won, and he is chairperson of maternal health in Foxy. He is still continuing in that place, and he has achieved wonders in different activities in that field. So Sanjay, without any delay, please share your screen. Hello Sanjay, please share your screen. Hello. Yes, it's visible now. You can start straight away. Good afternoon. Namaskar. I welcome all the participants, and namaskar to Sama madam and all the dignitaries. Special thanks to Rita who helped me to join in the webinar. Let us pray before the Almighty. This is the Nagarjuna base of Lord Jagannath. It is not that common. It is a rare occasion. Like PPH, it's also not common, but it's not uncommon. So citing a case of my career, Mrs. X, 17 years primipara, received at a PSC Rebana Nuaga, district Puri. Sanjay टिके ओडिया रे कहबो.
she came with a bullock cart बलद गाड़ी रे से झियोटी को नेकी ता बापा आस्थिला while I was a medical officer in Rebananaga PSC and joining after my post graduation. And the complaint of retained placenta, I mean to say, फुल पड़ी नथिला बोली से आसीथिला हॉस्पिटल को. She has delivered in the house. ता निज घरे तार spontaneous delivery हेची. A teenaged girl flooded with the blood. से सगड़ रे रोदर रे भर्ती की आस्थिला जोथरे की in a pool of blood. On examination, severe pallor, BP is 90/66, tachycardia, dehydrated with a cold clammy skin. Abdominal examination is soft, 26 weeks, but uterus is contracted. Or vaginal examination, multiple lacerations, cord tied with a thread and was bleeding. So I was horrified that day. Injection, medicine is not available in the hospital. Luckily, one medicine shop is there who helped a lot. That person get everything from the shop, medicine shop. Bakire, that time it was that much facility say hospital pakare thila. Still then I remember those days. So I started the resuscitation. Imeline, ringers lactate, catheterization इत्यादि करी करी सेतबळे available थिला brand name रे diclofenac was available, taxim was available, newly launched. सेतबळे देई साला पर tried to go for MROP. Fortunately I succeeded. I did the MROP, then put centosine and methotrexate, repaired all the tears, and advised to attend headquarters hospital at Puri for blood transfusion and follow-up. So it was finished by around 5 o'clock. I went to my residence in the campus. Next morning when I come, I saw that lady in the veranda. She had not transport to Puri. सेतबळे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एते नथिला, एक्सेस भी लोकंकर एते नथिला because of the financial crisis and of this. So she was in the veranda and feeding her baby. I was shocked. Why you have not moved? ता बापा replied, बाबू मरी जाइथिले तो मरी जाइथन तो तमे बंचैलो आउ कहीं के नहीं की जीबी जहा करिया कथा एठी करो. This is the version still I remember. किछि करि पारलेनी. हॉस्पिटल की तरफ रु निजर जहा सैंपल पंपल थिला त औषध दे के घर को चली. So those days are gone. We are quite improved in our health scenario. So let us see what postpartum hemorrhage is. What's our aim? To recognize obstetric hemorrhage. Many times you missed it. Even if it is hemorrhage, we miss that. Na samanya bleeding है तो कहीं के देखिए. No, it's not like that. To practice the skills needed to respond to a woman who is bleeding, we should have a practice. We should have a drill. We should have a enthusiasm to see all the problems associated in the labor room and to achieve competence in those skills. Not only we know how to manage, but we must have a competence to achieve that skill. So PPS is common, remain the major cause of maternal mortality and mortality in worldwide. It is the nightmare of obstetricians. The consequences of incident is most commonly under-evaluated. Many times you underestimate the bleeding. That is the major cause of the further complications. The unpredictable situation with limited infrastructural facilities and least time period for information, discussion and intervention, which deepens the gravity of the situation. It's a fact. We have limited resources. We have limited manpower. We have limited medicines. We have limited transport facilities. With this, we have to proceed. This is the global burden. It affects around 2% of all women in deliveries. It's the 1/4 of all maternal deaths, around 25% maternal death in Africa. 2 to 4% is out of vaginal, all vaginal deliveries, 2 to 4% land in PPH. In cesarean section, it is almost 6%. But most of the cases with uterine atony is around 50%. What we anticipate?
2/3 of the cases of delivery landed in PPH. It is a gross estimate around 2 lakhs women die in PPH every year. In India, it is around 20 to 25%. So coming to the definition. What is PPH? It is 500 or more within 24 hours of delivery. And in severe PPH, it is more than 1000. So coming to primary PPH, if the PPH happens in 24 hours, it is primary. Beyond 24 hours to 6 weeks, it is secondary. So coming to the MDG. PPH and MDG, the MDG-5 targets 109 by 2015. Now, you see the status where you stand. Coming to the causes, there are 4 T's: tool, trauma, tissue, and thrombin. The etiology is very good. Uterine atony is the major cause. More than 50%, I should say. It is around 70%. The mechanism may be overdistension, maternal exertion, infection, and uterine abnormality. Coming to trauma, it is due to laceration or rupture of uterus, involution, and hematoma accounts for 20%. It is because of uterine surgery or instrumental deliveries or hematoma formation. It affects the tissue. The retained bits of placenta accounts around 10%. It may be abruptio placentae previously in the placental remnants or in the fibroids in uterus. Thrombin plays a major role. It accounts around 1%. Coming to the primary PPH, maybe with atonic uterus, trauma, or is a combination of trauma and atonicity. Retained bit of placenta may be there, and rupture is a major factor. We must explore after each and every instrumental delivery and refer cases. Uterine inversion plays a major role. Blood coagulopathy, you cannot forget. Coming to the secondary PPH, mainly infection and subinfection. If you analyze the risk factors, it is placental abruption, placenta previa existing previously, over-distended uterus, is a multipetal pregnancy, PIH and severe PIH eclampsia, is a prolonged third stage of labor, infection, obesity is also one of the causes, instrumental delivery plays a major role, hematological disorder you cannot neglect, and basically in the Asian and African countries it is more. The sign and symptoms is obvious: pallor, confusion, dizziness, passing of large cords. This is the signs you can very well assess that lady is having PPH. Then you measure the blood pressure, it is decreased, heart rate is increased, pulse volume is diminished. These are all the features to assess the consequences of PPH. But how much time do you need? It is 2 hours from death, is 2 hours from PPH if you not treat properly. It is around 12 hours from PPH. 2 days out of obstetrical labor. If the patient lives in the such, within 2 days we may lose that labor. It is 6 days from infection. So coming to the initial management, first of all, call for help and establish the ABC. Access the airways and breathing. Circulation, you have to find out where the channel, where to put the IV line. Provide oxygen. Monitor the vital signs. Start fluid immediately, especially crystalloids. Coming to the catheterization and blood transfusion and laboratory tests next. Initially, put an IV line and proceed with the drugs. This is the protocol of management of shock or uterine atony. It is a medical or surgical procedure there to prevent atony.
and blood is the replacement factor in case of shock and severe PPH. You can assess shock by estimating the blood loss. There are so many methods to estimate. Different authors are put for a different methods. Time permits, I can detail. Otherwise, we must know approximation, approximately 500 to 1000 loss. It can be compensated. We can call it as mild. It is more than 1500, it's moderate. More than 2000, definitely it is severe. The blood pressure usually does not fluctuate in a minimal bleeding. But if the bleeding increases, gradually the blood pressure depends. And other vital parameters also signifies. This is the ABC. Always put oxygen, you see, for breathing and circulation, along with start drugs and exposure to other things. How much fluid? How fast? What happens in the labor room? Whatever the cannula we have, we try to push it up. But take it as granted that it should be a wide bore cannula. It should be at least 18, but 16 is beneficial. The volume is 3 times what you lost. Try for the blood transfusion. Replace as quickly as you can. And this should be guided by patient signs and response. Definitely pulse rate and BP consciousness has to be monitored time to time. If you consider the stepwise management, you go for the catheterization. After catheterization, go for uterine massage, go for uterine drugs, bimanual compression. Aortic compression is not always practical, but you can do it. You can try at your level. Go for a uterine camp packing. Whatever you have, it may be pad or a tetrazer like this, or the balloon. If not, go for the interventional procedures, Bill-in sutures, stepwise devascularization. If everything fails, go for hysterectomy. But right away, 1 week back, I had a patient. It was a referred case from other hospital. I did the examination, landed with a cesarean section, waited for the expulsion of the placenta, but could not succeed, tried for MRP, and then I find that it is a case of placenta accreta. Immediately I took the decision for hysterectomy, no other way out. Advice for blood transfusion, did the surgical hysterectomy, and the patient revived. So coming to the active management of PPH, tone, administering uterine contracting drugs like oxytocin, misoprostol. Controlled contraction is the third stage management is very much important. Massaging fundus of the uterus and monitoring for further sign of bleeding. This the medication is a long chat. Everybody knows oxytocin, metformin, or prostaglandin. Every drug is available nowadays. Adding to is tranexamic acid, which plays a very major role in this. Coming to the trauma, you must see for all lacerations, even if it is a parauteral tear, even if it is a small perineal tear, you have to repair because loss is there. But in case of previous cesareans, in case of instrumental deliveries, in case of obstetrical labor, you must search for the uterine rupture to see whether any rent is there. You have to repair then and there, otherwise you may lose it. But uterine inversion, though not common, it is not uncommon. You have to see how you can prevent uterine inversion. If it could happen, then how to repose the uterus. Every obstetrician, every person should have been versed with this technique. Coming to the tissue, placental separation includes small gauze of blood. What is the signs of placental separation? Lengthening of cord, gauze of blood, suprapubic walls. These are 3 cardinal signs you can see the separation of placenta. Then otherwise you see the adherent of placenta or accreta, increta, percreta. You do accordingly. Thrombin, the coagulation factor, and search for any hematological disorder if these have the history. This is bimanual uterine compression or aortic compression. You can do it at the table. So coming to the secondary PPH, what to do? It is often associated with endometritis, where antibiotic plays a major role. Ampicillin, metronidazole, or you can add with gentamicin.
Surgical measures should be undertaken if there is excessive or continuing bleeding. A senior obstetrician should be involved in decision making, performance of any evacuation of return product, because that time uterus is very soft. If you go on coating and all these things, you may rupture it, you may perforate it. Try to avoid these things with special precautions, putting syntocin and drip, oxytocin and drip in line. If continuing hemorrhage, if it is not respond to all these methods, you can try with insertion of balloon catheter. Chhattisgarh balloon or other balloon catheters are available. Otherwise, in the labor room with the condom, with the poly catheter, you can pack it. Add some antibiotics. Coming to the surgical management. Transvaginal uterine packing. It is always available everywhere in the labor room, in the OT. Some sterilized tetras or pads, you can put it at. If you put the pads, then you have to count and note it down. How many pads you have given, how many tetras you are given. You have to just jot it down. Otherwise, you may lose the packings. For the conservative procedure, there are so many things. Uterine artery ligation, ovarian or vaginal or internal iliac ligation. Today there is a practice to know how to go for an internal iliac ligation for all PGs and experts, those who are need. There should be special workshop for this purpose. This angiographic arterial embolization, it is not everywhere done, but if the facility is available, it is better. Otherwise, if you have the access to do all these things, you try it. Otherwise, go for hysterectomy. By this time, you may lose many amount of blood. So try to keep it in mind that decision making should be fast and immediate with your team. The surgical anatomy coming here, you see the different vessels where you can tie it up on opening the abdomen. And this is the B-lin suture. This is compressive suture. They are very modified. Like this is a unique technique developed by Christopher B. Lynch in 1997. And gradually the different methods also, co-suture and other suture facilities are there. You can practice in a leisure time and adapt in the OT when it is possible. Uterine packing. You must count all the tetras and pads. Uterine ligation. This is the point where you ligate the uterine vessels and ovarian vessels. And should be done bilaterally. This is internal iliac ligation or angiographic arterial embolization, where the facility avails, you can avail in a large chance. Otherwise, go for hysterectomy. So coming to the clinical findings, the blood loss you have to assess, the blood pressure you have to measure, going for the sign and symptoms and the degree of shock you have to prepare. And all the personnel along with you, they must be well versed with all these things so that you can access immediately and proceed fast. This is the thing which is gradually gaining weight. This is anti-shock garment. It is best for transporting the case to a higher center or the Apex Institute. You can prevent. Antenatally, you can correct anemia, search for the risk factors, active management in the third stage of labor, and then start in the OT with 10 units oxytocin with 1 by RL, delayed cord cramping, control cord traction, and inspection of the genital placental beads and sorry. This is a flow chart for management. You can have the different steps by stepwise. You can see for the tone, trauma, tissue, and thrombin, and different mechanisms are there. How to proceed? We have already discussed it. This is the Government of India chart. Everywhere in the all labor rooms and OTs they are depicted. And coming to the complications, what not? PPH, when we may land in anemia, we may have ischemia of the lactation, Sheehan syndrome, the postpartum pituitary necrosis due to severe PPH.
we may need blood transfusion for that. Is a dilutional coagulopathy, fatigue, myocardial ischemia, postpartum depression, orthostatic hypertension. These are all the complications, if not treated, that may land in death. So postpartum collapse is one of the complications. The different factors for this, what are the do's we have to go to prevent, to have a good management in the postpartum collapse? We have different trays in the labor room, in the OT. So we should have a well-stocked emergency trolley in labor room and OT. There is a crash cart with a defibrillator, endotracheal tube, wombo bag, and mask for resuscitation. Always maintain good records, and all record keeping facilities should be there. You have to jot it down, everything. List of emergency phone numbers of all the consultants, anesthetists, blood bank, staffs, attendants, OT in charge, everybody's. You must call for help. Blood bank accessibility should be there. Transfer arrangements should have been done immediately to Apex Center. And forget not to do the regular practice of emergency drill and training for resuscitation. You should not be panic. Do not attempt overzealous traction or umbilical cord in third stage. Do not delay in suturing the episiotomy or perineal tear, because that is the part where the blood is draining. In case of massive PPS, do not delay in shifting to operation theatre. Don't try in the labor room. If OT is open, you just shift it there. You can have a bigger light source, better table, and better arrangements. Do not ignore monitoring of the vital signs of the patient post-delivery. Do not delay in transfer to tertiary care center or ICU when resources are limited. Do not play wait and watch. No. First aggressive treatment will reduce the morbidity and mortality. So my take-home message is, prevention of PPAs is our priority. A dedicated teamwork is mandatory. It's a teamwork, it's not one man's job. Starting from the authority to the OT personnel, the labor room attendants, with nursing sisters, with anesthetists, everybody, it's a teamwork. Reduction in morbidity and mortality is our game. But don't forget to have a proper documentation and counseling to the attendants, the patient persons, and the nearby persons, so that you can save your skin and to avoid these legal complications. These are my references. After all, if you fail everywhere, then surrender before the Almighty. There are three P's you just remember: pack, praise, and pray. The pack to arrest bleeding, press, keep it pressing to arrest bleeding, and pray before the Almighty to arrest bleeding. Thank you. Thank you everybody for your patient hearing. Thank you, madam. Thank you very much, Sanjay. Any questions? Can the host unmute those who would like to ask questions straight away? Madam, everybody is unmuted. समस्त अनम्यूट अछंती आपण मैडम डाकी परंदी हमर बहुत सीनियर ओजी स्पेशलिस्ट जॉइन करचंती जण जण को आपण डाकी परंदी माने सजेशन जॉइन करचंती मैडम हमर सस्मिता स्वामी मैडम ओजस्विनी साधना मैडम प्रेमप्रिया मैडम बहुत गायनेकोलॉजिस्ट मैडम माने अछंती समान कोंतु हां तांकर अभिज्ञता एक्सपीरियंस के शेयर करिवे संजय भाई बहुत सुंदर कहले बहुत क्लियर बहुत ऑल द पॉइंट्स आ दीनबंधु सर भी अछंती गायनेकोलॉजिस्ट सर भी तांका व्यू टिके कोंतु काना पीपीएस त हम समस्त एक्सपीरियंस करिचे इन लाइफ आ संजय भाई प्राय सब पॉइंट टच करिसेंती किंतु मु चाहि आ सीनियर माने किछि किछि तांका एक्सपीरियंस शेयर करंतु ठीक अछि सस्मिता मैडम कोंतु ओजस्विनी प्लीज अनम्यूट सस्मिता मैडम टिका अनम्यूट करंतु सस्मिता मैडम को सस्टेन्ड इंटरेस्ट रहिछि वेबिनार गुडारे आ से प्राय सब अटेंड करंती सस्मिता मैडम हेलो
Hello, Sasmita madam. हेलो Ojaswini. मैडम नमस्कार मैडम Ojaswini, नमस्कार welcome. Welcome. हाँ 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 मैडम तमे नमस्कार experience share करो. I think Sanjay did a wonderful job. हाँ बहुत सब गुड एस्पेक्ट टच करला. मु खाली हाँ चाहूची हाँ से ओडिया रे कहितांता जे. कहना स्टाफ नर्सेस अछंती समय फर्स्ट मीटिंग रे अछि. हां टी ओडिया रे कहितले आ हाँ भलो हितांत समस्त बुझु. स्टाफ नर्सेस नाको लेवल जानि पे फुल इंग्लिश थिला हाँ बढ़िया हाँ हाँ बढ़िया प्रेजेंट कला. हाँ 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 अजस्विनी को हाँ मैडम तो हमें एक्चुअली तमर हमर सेठी स्टाफ बेसी नर्सेस प्रॉब्लम सिकलिंग एरिया टा तो पीपीएच एडेड टू सिकलिंग तुमरो कोन एडिशनल एक्सपीरियंस अछि ठीक को हम समस्त को फ्रॉम सिकल सेल क्राइसिस रे एमिति भी समान हिमो कंसंट्रेशन थाए माने मोस्टली जे डिहाइड्रेशन आसने अल्प हिमोग्लोबिन लो लेवल समान रहउची तो अल्प ब्लीडिंग है कि भी समान जेंति अन्य पेशेंट एनीमिक पेशेंट में जेंति टिके समय रे अल्प ब्लीडिंग रे भी कोलैप्स को जाई परंती ओजस्विनी तुमे वीडियो ऑन करना की नहीं नहीं करनी हो ठीक अछि हाँ हाँ सिकल सेल पेशेंट माने अल्प ब्लीडिंग रे भी तांगर पीपीएच रो सिम्पटम्स देखेबे काना तांगर ऑलरेडी कंप्रोमाइज कंडीशन रे थांती आउ माने आमे सबले प्रिपेयर्ड हेबाकू पड़िबो काना आमे सबले सिकल सेल जेते डिलीवरी करूछु सबले हाथ रे ब्लड रखी माने ब्लड इन हैंड रहबा दरकार काना बहुत केसेस माने अल्प इयर भी बहुत डिटोरेट कर जानती सेरा आमे ध्यान रखियो पड़िबो आउ सिस्टर माने सब समय प्राय डिलीवरी समय अटेंड करूछन्ती रहउछन्ती इवन तो मेडिकल कॉलेज तो ठीक अछि पीजी माने करछन्ती किमा फैकल्टी करछन्ती डिलीवरी किंतु पेरिफेरी रे सिस्टर माने डिलीवरी करछन्ती तो से माने जानिबा दरकार जे पीपीएच रो हाई रिस्क फैक्टर्स के को मान को अधिका हेई पारे केमिति से पीपीएच आइडेंटिफाई करिवे केमिति को कारण पई होछि बोली अनुमान करि परिबे जेंति कि यूट्रस जदी बहुत नरम लागुछि एब्डोमेन को पाल्पेट करिवे यूट्रस बहुत नरम लागुछि ताले से एटोनिक बोली भाबे कोडी टियर अछि ताले ट्रमा बोली भाबे त एटलीस्ट से फास्ट एड नॉलेज रहबा दरकार पीपीएच मैनेजमेंट पई आ जो कि माने आमे ओवर एंथुसियास्टिक मैनेजमेंट करिया जेमति कि ब्लीडिंग होछि ह खाली अल्प किछि फ्लूइड देकी ताको धीरे धीरे देखु तो सेटा न हो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट करबा आ 1:3 रेशियो जेमति कि अप्रोक्सीमेटली जेतकी ब्लड लॉस तार 3 टाइम्स हमको फ्लूइड देबाको पड़िबो एवं बेस्ट फ्लूइड होछि जोरा सर कहिले जोरा हमर क्रिस्टलॉइड जोरा कि रिंगर लैक्टेट किमा नॉर्मल सलाइन तो हम सिस्टर में जानिया दरकार नाइ कि जे डेक्सट्रोज लगेबे कि कोन सेरा रिंगर लैक्टेट एवं नॉर्मल सलाइन द बेस्ट फ्लूइड फॉर द पीपीएच मैनेजमेंट एवं ऑक्सीटोसिन से माने केते डोज रे देबे ताको भी जानिबा दरकार सेरा निहाती जानिया दरकार एवं आमे जे डोज रिपीट करूछु जेमति कि मिथाइल एर्गोमेट्रिन रो डोज रिपीट करूछु किमा प्रोस्टाग्लैंड डोज रिपीट करूछु केते इंटरवल रे हमें केमति रिपीट करबा एगुडा सब सिस्टम को अभिज्ञता रहया कथा काने सब थोर डॉक्टर जे मैनेज करते से निजे माने पैनिक थिबे ना तो गोटे एटा गोटे टीम एफर्ट समस्त एफर्ट रे हमें पीपीएच को मैनेज करि परिबा एटा ही मोर माने रिव्यू बहुत धन्यवाद अजस्विनी अपार्ट फ्रॉम सिकलिंग सेल हां सिकल सेल क्राइसिस बा सिकल सेल पेशेंट रो जदी हम लेबर रूम को नौचे व्हाट मोर प्रिकॉशन वी नीड हाउ मैनेज केमति करि हबो हां भाई सिकल सेल सब जगह रे मिलेनी स्पेशली डिफरेंट रीजन वेस्टर्न रीजन रे बा एपट रे केतळे occasionally in Rayagad and all these things so immediately गोटे पेशेंट असले everybody is panic जे सिकलिंग अछि हमें एठी सर करबानी रेफर कर दबा but how to manage that there भाई नमस्कार सर सिकल सेल एक्चुअली रियली गोटे हॉरिबल सिचुएशन फॉर द प्रेगनेंसी केना बहुत हाई मोर्टालिटी चांस अछि तो तांको पे सफिशिएंट डिहाइड्रेशन शुड बी करेक्टेड फ्लूइड मैनेजमेंट शुड बी मोस्ट अत्यधिक फ्लूइड मैनेजमेंट ओवर एम्फेसिस करबा फेलियर को भी जाई परंती बट दे शुड नॉट बी डिहाइड्रेटेड एवं ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन इज क्वाइट गुड एफर्ट हमें ऑक्सीजन तांको देबा एवं जो ड्रग्स मैनेजमेंट सेमति किछि डिफरेंस नाही बट मिथाइल एर्गोमेट्रिन अधिका डोजटा तांको पई टिके हार्मफुल बिकॉज़ इट कॉजेस इस्चीमिया एवं टिके डीआईसी रो चांसेस रहउची डीआईसी तो एक्जेक्टली कहि परियानी भासो कंस्ट्रिक्शन एवं भासोस्पाजम जो हुए मेथोर्जिन रे जो कि सिकल सेल पई टिके हार्मफुल बट आम पई आमे ऑक्सीटोसिन देई परिबा भलो भाबरे एवं प्रोस्टाग्लैंडिन भी देई परिबा एवं मिसोप्रोस्टल भी किछि कॉन्ट्राइंडिकेटेड नुहो तांको आमे आराम रे देई परिबा बट फ्लूइड रिप्लेसमेंट एवं ऑक्सीजन एवं तांको इन्फेक्शन प्रिवेंशन तांको they should be handled like a immunocompromised patient तांको इन्फेक्शन प्रिवेंशन तांको पई हमें बहुत जरूरी मूल्य भाउची अच्छा
usually एटी methyl आपन agometrin प्रदीप सर usually प्रदीप is not आचार्य a practice of आछंती today. अच्छा संजय भाई आपण हाँ। कहि दोची जे आमे एनीमिया और सिकलिंग ऊपर आ गोटे पूरा रखिबा ओजस्विनी कहिची हाँ 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 टाइम अच्छा, एटा देके गोटे रहइबो हाँ, डॉक्टर प्रदीप नहीं, आचार्य special- डॉक्टर हाँ। प्रदीप आचार्य आछंती सर मैं नमस्कार. देखुची डॉक्टर प्रदीप आचार्य अनम्यूट करंतु आ किछि कंट्रीब्यूट करंतु आजिर विषय वस्तु उपरे अच्छा गुड पीपीएच उपरे इवनिंग आपनकर एक्सपीरियंस आ कोन एडवाइस देबे हम हेल्थ केयर वर्कर्स मान को हाँ समस्त को नमस्कार मु आरोपित शुणी आसी बहुत भल लागू समस्त बहुत भल कहले एवं डॉक्टर संजय दास तो कम्प्लीटली कहि सारछंती मोर किंतु एडवाइस होछि एक्चुअली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हिसाब रे हमर जो आगुरु भाबिया उचित जे ई समय रे ई केस गुडा पीपीएच हबार चांस अछि लाइक मल्टीपैरिटी पीएच ए सब केस रे बाकी जो मानकर हिमोग्लोबिन लो अछि से मानको भी बहुत केयरफुल होबा उचित you must be very careful the hemoglobin केमते बढ़ई कि हमें ताको डिलीवरी पे नबा तापर नेक्स्ट हला एएमटी सेल त माने एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जेतबेला हमें करूचे जो प्लासेंटा डिलीवरी पे हम जो बहुत तत्पर ही जाउचे दैट इज क्रिएटिंग मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन नॉर्मल डिलीवरी हो बा सिजेरियन हो हमें सब बेला अपेक्षा करिबा जे एक्चुअली प्लासेंटल सेपरेशन हला पारे सिजेरियन रे हमें प्लासेंटा डिलीवरी करिबो आ नॉर्मल डिलीवरी रे भी एक्टिव मैनेजमेंट करबा त माने जा सब कहिले हम प्लासेंटल सेपरेशन साइंस जानला परे देखरे हमें प्लासेंटा डिलीवरी करे तले अनेक अगर हमें पीपीएच प्रिवेंट we can prevent then early use of syntocinon and misoprostol जेतले इमीडिएटली छुआ चली आछि इमीडिएटली आगरो लोड हेकरे syntocinon थिबो syntocinon में पुश करबा as per WHO advice 10 units intramuscular 10 units intravenous syntocinon and misoprostol sublingual दबा immediately after delivery ताले भी हमें अनेक जगह रे प्रिवेंशन इज बेटर हम प्रिवेंट करि परिबा जदि पीपीएच को जाउछि बहुत अर्ली ट्रीटमेंट इज नेसेसरी अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट लाइक massaging bimanual compression other drugs like methotrexate and prostodine इसबु बा ब्लड ट्रांसफ्यूजन अरेंजमेंट ऑफ ब्लड तक पठेबा ब्लड पई आगो इमीडिएटली इसबु दरकार तो हम बहुत केयरफुल हेले पीपीएच तो बहुत हम प्रिवेंट करि परिबे थैंक यू डॉक्टर प्रदीप आउ के कहि पेरी कहिबो चाहउचंती कि कंट्रीब्यूट तो मो समराइज कर दोची एक्चुअली प्रिवेंटिव फैक्टर्स जहां डॉक्टर आचार्य कहले बहुत बहुत इंपोर्टेंट एंटीनेटल करेक्शन ऑफ एनीमियाज ऑफ पैरामाउंट इंपोर्टेंस हमर सेटा बहुत देखियो दरकार हमें हम लोक मानकर एनीमिया रहउची आयरन से माने खाउ नांती कोन पे खाउ नांती सब इश्यू गुडा को एड्रेस करे पड़िबो तमे देखियो तमरो एंटीनेटल केयर बेले जेमिति हेले से आयरन जेमिति खाउ तो को टाइप रो एनीमिया भी अछि जानिबा पड़िबो पर्टिकुलरली सिकलिंग एरिया गुडा रे तापरे प्रिवेंटिव फैक्टर्स भितरे जोटा एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर ता सब डिलीवरी रे करियो पड़िबो आ इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन एंट्रोलैटरल साइड ऑफ थाई 10 यूनिट्स दबो एवं मन रखो जे जो एनीमिया अपार्ट फ्रॉम एनीमिया जदी प्री एक्लेम्सिया अछि ताहले भी अल्प अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस सेमानकर हीमो कंसंट्रेशन थाए उनकर अल्प ब्लड लॉस रे भी से माने सीवियर मॉर्बिडिटी तांकर हे जिवो एपी प्री एक्लेम्सिया गुडा सीवियर एनीमिया गुडा तमे बहुत 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 केयरफुल होबो और ड्यूरिंग डिलीवरी हमर डॉक्टर देवदास गुटा ये करथिले जति के ब्लड लॉस होउची से ब्रास बीड रे ये हो किबा केली पैड हो से जो ब्लड टा कलेक्ट होउची ताकू तुमे देखियो नजर दबो सेटा नजर न देले जानि परिबोन जे एक्चुअली केते लॉस हे गलानी एपे सबले सेठी की नजर रवा दरकार जे ब्लड लॉस टा न हुए एवं जो इमीडिएटली जदी देखुच कंट्रोल न होउची ऑक्सीटोसिन रे तब ऑक्सीटोसिन केमती बढ़ई बढ़ई जीवो तमे अटकी जीवनी 10 यूनिट्स दे दे कि 20 यूनिट्स दे दे कि आ मु ऑक्सीटोसिन दे देले कि आ हे हबनी तमे ऑक्सीटोसिन बढ़ई बढ़ई कि जीवो तमे 40 यूनिट्स पर लीटर फॉर 3 लीटर्स दे परिबो तेनी कर हुए तो 40 यूनिट्स रे से कंट्रोल हबो सेकंड लीटर रे कंट्रोल हबो सेतमे केबे भी ऑक्सीटोसिन ना सबटु सेफ एकोनसी कंडीशन में ऑक्सीटोसिन दे परिबा केवल मेथोर्जिन ता हमको बस पेरिफेरा आ मेथोर्जिन दिया जाउ नै
मेथर्जिन टा बहुत भलो ड्रग टा किंतु तार कंट्राइंडिकेशन अछि जदि हाइपरटेंशन थिबो प्री एक्लाम्सिया थिबो एवं हार्ट डिजीज थिबो किबा सिवियर एनीमिया थिबो मेथर्जिन देले प्रॉब्लम होबो एवं एबे सुनलो अजस्विनी मैडम भी कहले सिकलिंग थिले मेथर्जिन भी अवॉइड करबो सेति किंतु मेथर्जिन टे जदि थिबो एवं देई देले भी भलो जदि कंट्राइंडिकेशन नाही तापरे प्रोस्टाग्लैंडिन मध्ये अछि जो 15 मिथाइल PGF2 अल्फा सेटा रे भी कंट्राइंडिकेशन अछि जदि लंग डिजीज थिबो क्रोनिक सेगुडा रे दबो नाही सेटा कंट्राइंडिकेशन आजमा हिस्ट्री थिले दबो नाही नले सेटा भी बहुत भलो ड्रग किंतु मिसोप्रोस्टोल रे भी कोनोसी कंट्राइंडिकेशन नाही गोटे असुविधा होची सेटा टिके टेंपरेचर बढ़ी पारे सेति मिसोप्रोस्टोल तो समस्त को दे दवा पई गोटे 2-3टा टैबलेट जदि डेलिवरी परे रेक्टम भितरे जदि रखि देई परिबो तले फॉर द आ परे जो सेकेंडरी हेमरेज टा हे परे 24 घंटा परे कि कोन करे सेटा होबनी यूट्रस टा कॉन्ट्रैक्ट हेकी रहिबो आज बहुत बढ़िया संजय सर ठारू सुनिलो सब एस्पेक्ट पर से डील करले आ गोटे एनएसजी किट जोटा नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गार्मेंट धरो तमे के स्टाफ नर्स डिलीवरी करछो तमे सब चेष्टा कलो पारिलनी ट्रांसफर जतलो करबो तो बेलून टाम्पनाटा होय तो जानि न तमे ताकू एनएसजी किट जदी हमर हे गलानी कॉर्पोरेशन सेटा किनुची दिनबंधु सर हमको कहिबे केते बाटो से गला से येटा आ ट्रेनिंग टा भी बहुत सुविधा में ऑनलाइन वर्चुअल ट्रेनिंग भी दे परिबा एनएसजी किट रो ताकू जदी बांधी के पठे दबो 108 एम्बुलेंस रे ताहले बहुत ब्लड लॉस प्रिवेंट कर दे परिबो बांधीटा भी बहुत सिंपल बांधी के पठे देले ताले जोटी पहुंचबो सेठी हमर हाथ रे टाइम थिबो ब्लड दवा पई टाइम थिबो ऑपरेशन थिएटर को डायरेक्ट नै जा पई आ मने रखो सब जको डेटा पार्टोग्राफिक कंट्रोल ऑफ लेबर आल्सो प्रिवेंट्स पीपीएच मन रखो आ पठेला को पार्टोग्राफ रो चार्ट टा भी पठे दो ता संगे सब आगे पार्टोग्राफ विषय भी आलोचना करथिले मन रखो प्रिवेंटिव भितरे पार्टोग्राफिक मैनेजमेंट ऑफ लेबर पीपीएच प्रिवेंट करे एनीमिया प्रिवेंशन प्रिवेंट करे एगुडा सब तमे जत ट्रांसफर करबो ई सब चार्ट पार्ट डेटा सब देकरी पेशेंट हाथ रे पठेबो डोनर हाथ रे संगे रे नै की पठेबो आ मने रखो बहुत बड़ इंपोर्टेंट होची बर्थ कंपेनियन पेशेंट संगे जो बर्थ कंपेनियन आसो तमे मैनेज कला को से छुआ को धरिबो आ से माने से तुमको भी सहायता करि परिबो एवं संगे रे भी ताकू इंस्ट्रक्शन देकरी पठे दे परिबो ब्लड डोनर संगे रे पठे की नेक्स्ट फैसिलिटी की पठे दबो ताले हमें बहुत गुण रे आमे बहुत पीपीएच डेथ जोटा सब कॉमन मृत्यु हार एटा आमे कमी दे परिबा आमे समस्त गोटे बड़ टीम हे कि निश्चय संकल्प करबा ओडिसा रे मातृ मृत्यु हार कमेबा हम बढिया स्टॉलवर्ड्स अछंती संजय सर दिनबंधु सर आदित्य सर रीतांजलि मैडम आ सब एचओडी मानकर अछंती गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल रो हम समस्त मिसिकरी निश्चित भाव रे हमें पीपीएच डेथ निश्चय कमेबा बहुत धन्यवाद अनुरोध करछि दिनबंधु सर किछ हम कहबे थैंक यू श्यामा मैडम श्यामा मैडम आज जो जिनस गुरिक कहिले पीपीएच मैनेजमेंट पे हमर संजय कहिला ता सहित ओजस्विनी मैडम ऐड करले पीके आचार्य सर मध्ये ऐड करले समस्तिकर कनसर्न जे ओडिसा रे जे पीपीएच रे लोक मरुछंती एवं सरकार मध्ये सचेतन आमे माने सचेतन हम माने बसी ओजी स्पेशलिस्ट पीके आचार्य सर जते बेले थिले डायरेक्टर एवं एडिशनल डायरेक्टर थिले हम बहुत प्रोग्राम करछु मैडम कॉन्स्टेंटली हम सहित अछंती श्यामा मैडम एवं मते सब बेले दिनंदु तू शीघ्र किणी ये निम आठे नोटी गवर्नमेंट मु बहुत लोग भलो करपी हम ऑलरेडी ऑन द प्रोसेस एंड आई थिंक आमे बहुत कम समय नबु देला पर आमे मैडम को जेमते कहिले आमे निश्चय ताको अरेंजमेंट करिबा मैडम ट्रेनिंग देबे मैडम वर्तमान हम सहित जॉइन करछंती सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर प्रिवेंशन ऑफ मैटरनल डेथ आपण माने जानि नथिबे मैडम जो हेतु जॉइन करछंती मैडम वर्तमान टोटल स्टेट रो चार्ज नेछंती मातृ मृत्यु हार केमिते कमेबे तो मैडम को जो दीर्घ दिन रो अभिज्ञता अछि ताकू आमे यूज करू बेले एनएचएम मैडम को अनुरोध कलु हम अनुरोध रक्षा करी मैडम हम सहित अछंती दीर्घ 1 वर्ष हैला वर्तमान से मध्ये हम सहित अछंती काम करूछंती आ प्रोग्राम टी दृष्टि मु कहिबी आपण माने जानि खुशी हेबे ओडिसा गुटे राज्य जोठी 86% ऑफ डिलीवरीज इंस्टीट्यूशनल हुए एवं 14 रु 15% डिलीवरी होम रे हुए जो होम डिलीवरी होउची सेठी हमें सबु आशा मानकू
आमे दउछु पेशेंट को हैंड ओवर करिया को तीनटा मिजोप्रोस्ट जोटा मैडम कहउतिले मिजोप्रोस्ट से मान रखिबे एवं तांको कुहा हेछि जे अंडर ऑब्जर्वेशन केतेबेले से माने मिजोप्रोस्ट यूज करिवे कोन करिवे तांको कुहा हेछि तेनु एवं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आमे ऑक्सीटोसिन ड्रग देइछु एवं डिस्ट्रिक्ट मान को मध्ये कहउछु जे शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीटोसिन जो कहउचे जे शॉर्ट हे गेला ऑक्सीटोसिन शॉर्ट हे गेला सेटा गोटे भूल धारणा कारण आमे कहउछु जेतेले आमे सेंट्रल सप्लाई करि पारनु डिस्ट्रिक्ट मान पाखरे मध्ये 20% टंका अछि से मान केतु किनि परिबे तेणु ड्रग नाही बोली केतेबेले जे जोटी कहउछु एटा गोटे बड़ भूल धारणा सरकार को ऊपर परोक्षरे बा प्रत्यक्षरे दोषारोप करियाबा समस्ते आमे लागिछु जेतेबेले आमे जे कोनसी प्रोग्राम करू आचार्य सर हम सहित बहुत दिनरु संश्लिष्ट अछंती मैडम मध्ये जेतेले प्रोग्राम होतला सस्मिता मैडम आसंती शुभ्रा मैडम आसंती तेणु समस्ते आसंती ओजस्विनी मैडम कर मैं बहुत थोर साहाय्य नेइछु तेणु समस्त इन्वॉल्वमेंट रे आमे समस्त प्रचेष्टा करिबा केमिते पीपीएच कमी जीवो मु खुशी हेली जे बहुत किछि दिन तळे एससी मेडिकल कॉलेज रे गोटे परीक्षा मूलक अनुसंधान हेइतिला जोथरे जणा पडिला जे पीपीएच वर्तन प्राइमरी कॉज नु ऑफ मैटरनल डेथ रादर दी एक्लाम्सिया प्रॉक्सिमिया प्रेगनेंसी इज द प्राइमरी कॉज तेणु जहा हो आमे खुशी होबा कथा नुहे जहाँ मैटरनल कॉज में जो डिफरेंट कॉजेस है पीपीएच हो टॉक्सिमिया हो इन्फेक्शन हो आमको बंद करिया को पड़िबो रखिया को रोकिया को पड़िबो आमे ऑफ कोर्स आमे रिड्यूस करिचे 170 पर 1 लाख ऑफ लाइव बाथरू आमे 158 आसी पहुंचलेनी बर्तमान सॉरी 150 को आसीचे रिसेंट स्टडी कहूची किंतु हमको लॉन्ग रास्ता जीवा को अछि कारण हमर जो गोल अछि दैट इज एसटीजी गोल दैट इज ओनली 70 सो सेही गोल को हमको लक्ष्य रखी हमको कार्य करिया पड़िबो आपण माने समस्त ए कार्यक्रम रे योगदान करथार मु धन्यवाद दउची एवं समस्त अवगत करिसेंती विचक्षण भाव रे एवं मोर जो स्टाफ नर्स भौणी माने अछंती से माने सबले जानंतु जे पीएमएसएम रे जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिनटी होउची ताकू आपण केंते भलो कि कंडक्ट करंतु बेटा सर कहउथिले संजय सर कहउथिले जे आपण को मानकर डेलीवरी हो आचार्य सर मध्ये कहउथिले मल्टीग्राविड प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन फाइब्रॉइड यूट्रस एगुरा को पीएमएसएम डे रे ओनली स्पेशलिस्ट और पर्सन हैविंग गायनिक नॉलेज से माने डायग्नोसिस करि परबे एवं सेठु हमें अल्ट्रासाउंड पे पठौ आपण माने जानिथिबे अल्ट्रासाउंड करिया पे हमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रे जोटी सुविधा नै स्टेट मध्ये हमको करिछि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रे हमें करि परबु एवं तांको स्टेट सेते किछि पैसा देउछि एवं तांको ना ऑनलाइन रे रजिस्ट्रेशन होछि माननीय प्रधानमंत्री मध्ये गला थरा हमर 4 जण अल्ट्रासाउंड डॉक्टर को रिकॉग्नाइजेशन रिकमेंडेशन एंड अवार्ड देइछन्ती तेनु आमे देखिबु हम स्टेट किंदे बहुत अवार्ड पाइबो माननीय प्रधानमंत्री को पाखरु से दिवस चेष्टा करिया त्यसरे मु समस्त धन्यवाद देउछि एवं समस्त प्रचेष्टा करिया निश्चय हम राज्य दिने सुनार राज्य हेई मातृ मृत्यु हार कमेबारे सक्षम हेबो धन्यवाद धन्यवाद दिनमन सर आउ सारी लुसी मैडम को देखु अच्छे जे कही भल लगी था लुसी मैडम आप किसी कहे कि हेलो नहीं मैडम एक्चुअली डेरी रे जॉइन कली वो टिके सियाडे व्यस्त रह जाईतिली ते चित्तर प्रोग्राम रे पढाईतिली आसिकरी टिके व्यस्त रह जाईतिली मंडी कोन आसीओ तो 7टा बेले हां 7टा बेले आसीओ पुणी सेठी की जिबो आखरे बहुत बड़ा गोटे हमर लॉस है बहुत बड़ा लॉस कैशलेस किडनी ट्रांसप्लांट हेतिला ताको द्वारा एक्चुअली कैडेवरिक ट्रांसप्लांट ता हमर टिके बहुत चली थांता किछ दिन टिके अटकी जिवो हेगला पुणी को जणे रूम हला बेल को आउ जणे सेही बलिया लोक तेनो किछ नै पीपीएच तो मैडम आपण अछंती डिस्कशन तो हेइथबो निश्चय भल रे से विषय तो विशेष किछ कहबार नै हमर तो ड्रग जदी डब्ल्यूएचओ कार्पेटोसिन हां हां संजय तो दिनमन सर कार्पेटोसिन रो ये दरकार नै ये हां प्रिजर्वेशन रेफ्रिजरेशन दरकार नै कोल्ड चेन दरकार नै तेनु करी सेटा किन बहुत एक्सपेंसिव जानि नै सेटा केते दूर प्रोग्राम भीतर को आसंतु मीना मैडम कोन जस्ट जॉइन कर लेबे मैडम नमस्कार एक्चुअली भी आउ दीटा
वेबिनार थिला मिनिस्ट्री रो गोटे थिला अलगा गोटे थिला तो सेठी थिली मु पूराटा जॉइन करि पारिनी अटेंड करि पारनी मैडम आपण कंक्लूडिंग रिमार्क्स देकरी कंक्लूड करंतु आई डू एक्सपेक्ट भलो कंक्लूडिंग रिमार्क्स सही गलानी दिनबंधु सर दे देले कंक्लूडिंग रिमार्क्स अच्छा अच्छा मैडम भी कंट्रीब्यूट करले कार्बेटोसिन जदी यूनिसेफ हेल्प कर परिबो कार्बेटोसिन वी कैन लॉन्च सेटा ये थर्मो stable सेटा it doesn't require refrigeration but it's little more expensive if we can have pilot studies dinondu sir कहले यदि किछि proposal दिया जाए कार्बेटोसिन is a very effective drug oxytocin like oxytocin तारो research है सारिची WHO research है सारिची सुजाता मिश्रा was the principal investigator HOD of Balasore she hasn't joined if she would have joined we would have asked her experience Kintu it is a good drug if a corporation can buy it and some proposal Dinabandhu sir was saying we can launch it in certain areas to prevent PPH. It's a very safe drug and thermostable. ठीक अछि we can look at a pilot कि हमें कि तारो studies और reviews देले हमें नले दे परिबा OSMCL जदि procure करि परिबे so we can work around that और दरकार हेले pilot study हमें support कर परिबा we can look at that madam किछ असुविधा नै it is being used in other states madam Tamil Nadu वगैरह में यूज करू छथि pilot area heichi I don't think it has been accepted by government of India as yet Sujata Mishra knows about it I'll get in touch with her and we can have a discussion next week sometime we can have a discussion around that madam actually Sujata Mishra madam मु कहितले से कोटोटे बाहर अछंती बोले जॉइन करि पारिलेनी से इंटरेस्टेड ले जॉइन करे पे आजी कहले मु गोटे बाहर अछि सेते में जॉइन करि पारुनी ठीक अछि मैडम किछि असुविधा नाही हमें नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे अडकू दिनबंधु सर आपण श्यामा मैडम मु एमती करके वी कैन हैव अ डिस्कशन सुजाता मैडम को संगे रे वी कैन हैव अ डिस्कशन एंड सी व्हाट कैन बी डन दिनबंधु सर तो अछंती सर गाइड करि देबे एंड वी कैन मूव किछि संजय भाई को बहुत बहुत धन्यवाद आज बहुत बढ़िया करी कहले एते सुंदर सब पॉइंट टच करके कहचंती आ टिके ओडिया रे कहले आ टिके भलो हिता जेहेतु स्टाफ नर्स माने रहउचंती फिर भी बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस रे स्टार्ट करले भारी बढ़िया लागला किंतु बहुत सिंपल थिला तेनो बहुत भलो समस्त बुझी पारितबे हमरा आज बहुत गायनिक मैडम माने जॉइन करचंती सर मैडम बहुत जॉइन करचंती तेनो बहुत फ्रूटफुल हला आचार्य सर को बहुत बहुत नमस्कार सर आपनकर व्यू रखिले श्यामा मैडम तो अछंती हमरो गाइड हेकरी मैटरनल हेल्थ रो मदर हिसाब रे दीनबंधु सर आ ओजस्विनी तो हमरो सब बोले पार्टिसिपेट करूची इज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक्स सस्मिता साई मैडम भी तांकर ओटे कोन प्रॉब्लम थिला डेंटिस्ट